हेलो वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो एवरीवन। सबसे पहले तो यू नो द ड्रिल, अपनी अटेंडेंस लगाओ, जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वेलकम बैक वंस अगेन। अंकित, वेलकम बैक। Yes, yes, काफी yes. कुछ है बात करने के लिए अपने पास Hmm. आज के शो में, एंड यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन जो हमने टाइटल रखा हुआ है फॉर द वीडियो। सो टाइटल नहीं, आई थिंक द इमेज इटसेल्फ, जो पिक्चर हमने लगाई है, आई थिंक उसी से पता चल जाएगा हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो Ankit, Virat Kohli smashes 100. Unfortunately, run out हो गए, but Hmm. smashes 100 in his 500th international game. So, what do you make of the innings first of all, and in the game in general? I mean, we all know कि result क्या होने वाला है, but Hmm. what do you make of the innings and this achievement? I mean, totally class. I think yesterday, I think जितना excitement उनके 500 match के लिए था, उतना ही the kind of excitement it was. We wanted him to get that big score, and really nice to see him getting that because 2019 or I think 2018, the last century he scored was in Perth, and after that, I think 5 years. So obviously special. We all were excited when he scored that 70th century. I guess 71st. Sorry for that. It was unexpected, but I think this one was. I think deserves a lot of credit, especially in the conditions. I think too much. The climate has been not that where you can adjust yourself. I mean, अगर players का you see the way players seems to be tired, but when it comes to Virat at the age of 35, I think he looks brilliant. What about you? I mean, आपके लिए Yeah, कितना yeah. special? आई मीन जो जॉश डिसिल्वा है ना, उनका विकेट कीपर, एंड Yeah, कंसिस्टेंटली पीछे से कुछ ना कुछ तो बड़बड़ करता था स्टंप माइक में। आई थिंक वेस्ट इंडीज में मैच होने का एक बहुत बढ़िया वो है कि यार, टीम भले ही इतनी अच्छी ना हो, बट द स्टंप माइक है ना, वो सबसे बेस्ट है। आई थिंक वेस्ट इंडीज में जब भी हम कोई विकेट कीपर, हमें yeah, उनकी भी बातें सुनाई देती है, हमें अपनी भी बातें सुनाई देती है। सो आई थिंक द स्टंप माइक इज रियली गुड वेस्ट इंडीज का जब भी टूर होता है। क्रिकेट की हम बात ना करें तो चलेगा, बट आई थिंक ओवरऑल या आई थिंक ग्रेट अचीवमेंट। और कहीं तो स्टैट पड़ा था ट्विटर पे कि 50th इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर स्कोर्ड हिज 29th टेस्ट 100, and in the 100th match between India and West Indies, Virat Kohli has scored his 29 test 100. दोनों yeah, बैट्समैन 121 के स्कोर पे आउट हुए थे। दिस इज अ बिग स्टैट which I think हमें ट्विटर पे देखने मिला। yeah, सच होगा, आई थिंक सोर्स काफी रिलायबल है हमारे, सो आई थिंक दैट्स अ बिग स्टैट। बट yeah. ओवरऑल आई थिंक इंडिया 388 फॉर 6, Hmm. 112 ओवर। आई थिंक what do you make of, डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिकॉज ईशान किशन को एक रन से ज्यादा बनाने दिया रोहित शर्मा ने इस बार। Yeah. सो what do you think? I think 400 should be the ideal. I think the score. I think यहाँ से और 15-20 रन unless I guess एक और होती है सोच कि एक आध कोई आउट हो गया तो anyways I think it's the time best way to get declared. But I think बहुत excitement है. But हालांकि इस मैच में we as you mentioned earlier कि बात वो टाइम की कब इंडिया actually will get West Indies in both the innings all out and then will win. But दूसरी तरफ एशेज भी चल रहा है। आई थिंक द काइंड ऑफ टेस्ट मैचेस गोइंग अराउंड एंड कपल ऑफ डेज बैक आई थिंक श्रीलंका पाकिस्तान वो भी एक अच्छा मैच था। सो टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक अभी रियली एक्साइटिंग टाइम्स। आई मीन डब्ल्यूटीसी की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत हुई है। अरे बहुत सी हुई है। आई थिंक मैंने पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखा था, बिकॉज हम उसके या बारे में कुछ बात करेंगे तो अभी कर लें तो चलेगा। बट हम्म ब्रिलियंट गेम यार। आई थिंक श्रीलंका पुट अप अ फाइट, बट साउथ शकील मैन, व्हाट अ या क्लासी बैट्समैन। एंड लेफ्ट हैंडर्स थोड़े एलिगेंट लगते हैं, व्हेनेवर दे प्ले दोस शॉट्स। आई थिंक दे या रियली लुक elegant when they're playing that inside out shots, cover drives and stuff. So I think really impressed with Saud Shakil and Aga Salman as well. बट या पाकिस्तान डिजर्व्ड टू विन द मैच। आई थिंक या उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बढ़िया बैटिंग करी, बिकॉज वो भी थोड़े परेशानी में थे। 101 फॉर 5, उसके बाद बिग पार्टनरशिप बिटवीन आगा सलमान एंड साउथ शकील। सो मजा आ गया यार देख के। तो आई थिंक या ओवरऑल द लेवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन बोथ, आई थिंक ऑल द 3 games has been really good. वेस्ट इंडीज को मैं अभी इतना काउंट करूंगा नहीं, बिकॉज दे हैव डिसअपॉइंटेड अ बिट, बट ऑस्ट्रेलिया रियली डिड वेल। आई या थिंक मेरे हिसाब से 317, इवन दो एवरेज स्कोर से कम है मैनचेस्टर में, बट इट इज स्टिल अ फाइटिंग स्कोर। इंग्लैंड बैटेड रियली वेल। आई मीन ये जो बैस बॉल है ना, पहली बार आई थिंक हमें बैस बॉल का हमें ये मतलब लगता है कि जाओ मारो मारो मारो, बट अभी फॉर द जस्ट सॉरी टू कट यू बट उसी आपने वो टॉपिक लाया था। आई वाज फॉलोइंग द स्कोर बोर्ड एंड जस्ट 30 मिनट आउट हो चुके हैं। सो 98 फॉर 3 ऑस्ट्रेलिया। एंड या आई मीन कंटिन्यू बट
आई मीन ये टेस्ट मैच तो देखने लायक है। आई थिंक अभी तक जो कंपैरेटिवली आई थिंक जस्ट द हाइप इट हैज बीन अराउंड, एंड आज का जो टेस्ट मैच आई थिंक अभी तक जॉनी बेयर्स तो 99 नॉट आउट आई मीन। या अरे बहुत बहुत खराब लगा यार देखिए, बिकॉज बढ़िया बैटिंग कर रहा था। आई थिंक ही हिट सिक्स, आई थिंक 3 सिक्सेस ऑफ, कोई तो फास्ट बोला था, आई थिंक पैट कमिंस था, हेजलवुड था, या दोनों में से एक था। एंड देन अनफॉर्चुनेटली स्टंप पे बॉल डाली गई जेम्स एंडरसन को फाइनली, क्योंकि उसके पहले तो खाली बाउंसर ही पड़ रही थी उसे, बाउंसर ही पड़ रहे थे, एंड द एंटायर फील्ड वाज अराउंड द स्टंप्स, और फिर भी जॉनी बेयरस्टो भाग भाग के रन निकाले जा रहा था। सो आई थिंक या दैट वाज समथिंग व्हिच ऑस्ट्रेलिया मिस, बट या यार अनफॉर्चुनेट 99 पे वो भी एशेज 100 मिस करना, बट या ब्रिलियंट इनिंग्स। आई थिंक काफी लोगों का मुंह बंद कर दिया होगा जॉनी बेस्टो। आई थिंक मैं भी उसमें से एक था, ओनली बिकॉज मेरे को थोड़ी कीपिंग के ऊपर थोड़े क्वेश्चन थे जॉनी बेस्टो के, बट आई थिंक द वे ही बैटेड या ब्रिलियंट। आई थिंक कंडीशंस दे वर इन द फेवर, बट जो तू बोल रहा है ना कि मैच अच्छा होगा, आई डोंट थिंक सो मैन। आई मीन अगले 2 दिन का जो बारिश या वेदर फोरकास्ट है, it is only rain and thunderstorm. That is the या only reason England decided not to declare, and जितने ज्यादा या रन बना सकते हैं उन्होंने बनाने को ट्राई करे, and I think they lead by 275 or something at the Yeah. moment. So So I guess uh, it's only safe to say that England is not losing this match. Other possibilities still, we have a draw on the board. England, they might go. What do you feel? Agar I'm still assuming like more half-hour game. So hmm. 7 to 8 odd overs. Can they get one more and then 6 wickets? Expecting in the next 2 days that give us 60 to 70 overs will get the job done. हाँ मतलब देख, अगर एक विकेट और मिल जाता है ना उन्हें, दे जस्ट नीड Yeah, मे बी जस्ट मोर देन अ सेशन टू गेट ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट मेरे yeah, हिसाब से तो। और होपिंग कि वो इतनी बड़ी लीड ना कंसीड कर दे इन द थर्ड इनिंग्स, बिकॉज 275 स्टिल लाइक अ विनिंग लीड मेरे हिसाब से। दे स्टिल ट्रेल yeah. बाय 177, यस 177 की ट्रेल है अभी भी। सो आई Hmm. थिंक इंग्लैंड ट्राई करेगी कि उन्हें वो स्कोर के अंदर आउट कर दे। इफ नॉट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ओनली प्लानिंग फॉर अ ड्रॉ, एंड उनको वही चाहिए यार। इफ इंग्लैंड does not win this game, ऑस्ट्रेलिया एशेस लेके जा रही है वापस घर। सो आई Yeah, थिंक दैट इज द प्लान कि यार जल्दी से जल्दी इन्हें आउट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट इन इंग्लैंड्स हैंड, क्योंकि उन्होंने फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया, एक yeah. इंजर्ड मिचेल मार्श खेला, देन द एंटायर Mhm. लोड वाज ऑन द 3 फास्ट बॉलर्स। सो आई थिंक पैट Yeah, कमिंस को वो समझ में आया होगा कि शुड नॉट ड्रॉप मे बी लाइक अ स्पिनर मेरे हिसाब से तो इन द 11, बट या yeah. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। हाँ, हाफ एन आवर का गेम बचा तो होगा मेरे हिसाब से, Mhm. 6:45 6:30 के आसपास तक चलता है यहाँ पे लोकल टाइम Yeah, के हिसाब से। सो या yeah. अगर एक दो विकेट और मिल जाते हैं, देन डेफिनेटली इंग्लैंड कैन फिनिश दिस इन वन Mhm. मोर सेशन। But एंडरसन but टारगेट what do you feel 700 like, विकेट। yeah, I think ये comment के बारे में भी I think I guess 11 wickets away from 700, I think that's one mark. या But do you feel like कि यार एंडरसन को इस सीरीज में ये होना चाहिए था? Because currently I was looking and reading one of the stats on Twitter, he averages currently 80 plus as of now, because I think he has got couple of strikes, I guess 4 wickets in the series. So but average of 80 to 85 plus for a bowler like Jimmy Anderson, especially in his own conditions, an Ashes series. I think that doesn't suit him. Obviously, he hasn't played that one odd match, but apart from that, I think we expect him to really go better. But अभी एक और चीज जो है, I personally felt कि जॉनी बेयरस्टो की innings, I think no doubt that was one of the best. But I felt कि 250, I think वो mark तक, I think it was sufficient. अभी ये हालांकि अभी भी ये जवाब जो है, it might just falter, because I feel कि England may go on to win this match as well. बट व्हाट डू यू फील कि क्या इंग्लैंड ने ज्यादा वक्त ले लिया, लाइक 270 280 जॉनी बेयरस्टो की सेंचुरी की तरफ ज्यादा आई थी? आई फेल्ट कि द लिमलाइट वाज मोर ऑन दैट। नहीं यार, मेरे को नहीं लगता। आई थिंक प्लान वाज कि जितने ज्यादा हम रन बना लो बना सकते हैं, जितने ज्यादा रन बना सकते हैं बना लो, ओनली बिकॉज ये मैच में इंग्लैंड डू नॉट वांट टू बैट अगेन, एंड दे ओनली वांट टू गेट ऑस्ट्रेलिया आउट बिलो जितना भी उन्होंने टारगेट दिया भी। आई थिंक 275 इज प्रीटी मच द टारगेट फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर इंग्लैंड टू विन द गेम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करेगी, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया को खाली बैटिंग करनी है, दे डोंट हैव टू स्कोर द रन्स। आई थिंक दे जस्ट हैव टू प्ले फॉर अ ड्रॉ, एंड देन दे विन द, they take home the ashes, they regain the ashes जो कहते हैं for this series. So इंग्लैंड के लिए दिस इज लाइक अ डू और डाई गेम। दैट इज द या ओनली रीजन आई थिंक दे डिसाइडेड कि यार हमें 600 तक के पास पहुंच जाना चाहिए, एंड they pretty much managed to do so. 592 या for the first time. I think that is the highest score for England in England, I think, since 2011. So I think that is a या big achievement. 12 साल बाद they have scored like pretty big in their home conditions. So या coming back to यार एंडरसन वाला point ना, मेरे को लगता नहीं that he has bowled that bad, to be honest. Yes, he has not picked up wickets, and I think वो एवरेज यही दिखाएगा because Australia has batted really well. But
he has been economical in that point. और बाकी जो end से wickets आए हैं, Mark Wood, Chris Woakes, I think Anderson has done really well in that part as well. But हाँ, I think, to be honest, as a fan, I can see Anderson ka, the end is near, I think, in terms of his test career. Maybe he's just targeting यार वो जो 700 वाला wicket का जो I think mark है, I think he's targeting that 11 wickets away, जैसे नसीरुद्दीन भाई ने यहाँ पे कह दिया कि Hmm. Anderson is targeting 700 wickets. Yes, Yeah. we all think so as well, but I don't think he's playing for that stats. Just because Hmm. he would like to end on a really, really good note, I Yeah. think one target is enough. You never know, he can reach 709 as well, which is like the second best. But yeah, I think overall brilliant career. Around 40 के age में continuously to play test match cricket and as a fast bowler, Hmm. it's Yeah. commendable. I think ऐसा Yeah. player हमेशा दोबारा मिलेगा नहीं in terms of like fast bowling, who can bowl consistently till 40 and still get Hmm. wickets. So I think, Yeah. yeah, big congratulations to James Yeah. Anderson, and hopefully England wins this game. मैं थोड़ा सीरीज में मजा आएगा. हाँ यार, आई मीन बिकॉज वो एक चीज है, आई थिंक, आई डू फील लाइक कि जो आपने एंडरसन का मेंशन किया, आई डू फील लाइक maybe Broad might go closer to that, but I'm not sure will you Yeah. overtake or not, because I think he looks like he's someone who always hunts for wickets, and आज भी I think the way he has bowled in this test match, 600 test wickets. लेकिन अभी England reaching 600, one of the biggest reasons was the innings that was played yesterday. Jack Crawley. We all remembered him for his 267 against Pakistan. If I'm not wrong, I guess it came in Manchester Yeah, I 2020. think I so. guess Yeah. I'm not sure which series, but उसके बाद से he never scored a century. I guess it was against West Indies, in West Indies itself. But this innings might be remembered for a long time. I hope and many more to come. But I mean, यार ऐसे कौन खेलता है इतनी पिटाई? तो आई मीन पीपल विल नॉट टेक अप द जॉब एज अ बॉलर इन द अपकमिंग टाइम्स इन द फ्यूचर. नहीं यार, आई थिंक जैक क्रोली हमेशा से ऐसी बैटिंग कर रहा है. प्रीटी मच कल उसका दिन था. यू नेवर सी again, मैं फिर से कहूंगा कि I don't think we will again see like 400 runs being scored in like just a day's play of cricket once again, unless ये इंग्लैंड दोबारा ऐसे कुछ कर जाती है. But yeah, I या think brilliant innings, one of the best Ashes 100 हमने जो देखे over the years. और पहली बार ना मेरे को आई थिंक ही प्लेड सेंसिबली, मेरे को ऐसा लगा. yes, he was going after runs, but एक होता है कि यार you see that intent, क्योंकि जैक क्रोली को हमेशा देख के लगता है कि यार अब आउट हो जाएगा ऑफ स्टंप के बाहर, अब आउट हो या जाएगा ऑफ स्टंप के बाहर. सो ये इनिंग्स में वैसा लगा नहीं. एंड लाइक आई सेड यार, to stick with these kind of players, Ben Duckett, Zach Crawley, Ollie Pope, yeah, Johnny Bairstow, for example, as well, shows a lot about the England management at the या moment. यार वो I think इतने वो नहीं है कि यार इमोशनल कि यार हमें रन्स नहीं बन रहे ये बंदे से, तो I think let's drop him. So I think that is really good on that part, and I think वो pay off कर रहा है. Just like that, I think India का भी एक विकेट चला गया. Yes, I think Ishan Kishan is out, caught by De Silva of Jason Holder. So India 395 for 7 है फिलहाल. आई थिंक या तेरे बात से मैं अग्री करता हूँ. आई थिंक 400 के आसपास जाएंगे एंड दे विल काइंड ऑफ लुक टू डिक्लेयर. सो थोड़े या कमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए यहाँ पे. जस्ट स्पोर्ट्स इज सेइंग ऑनेस्टली व्हाई इंडिया प्लेयर्स चूज विद वीकर साइड्स आफ्टर एवरी आईसीसी एसीसी टूर्नामेंट. You lose World Test Championship final, play West Indies, Rohit scores, Virat scores, Jadeja scores, and over. How will they get exposed? यार expose करने की कोई बात नहीं है. To be honest, it is pretty much कि साइकिल ही वैसा बना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का. पॉसिबल है कि इसके पहले हम किसी और को खेल लेते हैं, देन वी प्ले वेस्ट इंडीज, पर हम वेस्ट इंडीज को खेलने ही वाले थे. सो आई डोंट थिंक इसमें देयर इज एनीथिंग टू एक्सपोज प्लेयर्स और समथिंग. अबे दीज आर ऑल आई थिंक ग्रेट प्लेयर्स मेरे हिसाब से. आई थिंक विराट कोहली ने दिखा दिया आज की yes, even though लोग कहते हैं कि chasing balls outside the off stump is his weakness, I think he reached a big milestone with that shot as well. So sometimes it pays off, sometimes it doesn't. I think World Test Championship, yes, सबको डर तो हुआ यार वो हार का, but at this moment we only aim to get our players for the 2023 ODI World Cup in the best possible form. और कोई reason नहीं है. आप मैच जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता at this moment. I think the aim is only to get the best squad and the best possible squad जो in form है. So I think that is the target. Nothing like कि यार ये score करेगा कि नहीं करेगा, हम हमेशा weaker. Pretty much India has beaten all the sides. So you cannot say कि यार only West Indies is weaker. हम श्रीलंका से भी खेल सकते थे, हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इंग्लैंड से होम पे खेलेंगे. Of course you would still say that England could be a bit weaker. So I think that's not the point in my opinion, but ये हमेशा से होता रहा यार. I think most other teams do that, and there's nothing wrong in it मेरे हिसाब से. Just get the best possible squad for the ODI World Cup. And the name I was looking actually जो comment पे, I think it was
I think if you look the first name Rohit Sharma, I think the way I think अगर अभी ना रोहित की बात करें ना, I was reading one of the stats कि as a opener in the last 29 innings he has got 2 double scores, and this shows कि it's easy to say कि यार conversion rate थोड़ा it's not good that he's centuring not scoring centuries and all, but as a opener at times he gives you the start, and I guess WTC final and all, and even the England series I think if you look. So I think एक चीज जो हम थोड़ा लाइमलाइट में कम होती है, बिकॉज अगर यंगस्टर होते तो अलग होता है, व्हेन आफ्टर 34 35 यू जस्ट लुक कि प्लेयर कितने मैचेस जीता रहा है, बट रोहित शर्मा आई थिंक एज अ ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, जितनी बातचीत होती नहीं है, बट आई थिंक रियली वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू दैट आफ्टर his 5 centuries in 2019 World Cup, and really nice to see Yeah. him, and hopefully उनके भी centuries अभी तो I don't think so एक और innings आएगी इंडिया की, but South Africa tour. So and उस जो comment है I think that's the one thing कि you are starting to prepare a team for as well for upcoming cycle. I think South Africa series I think it will be one of the challenging. Last time जीते नहीं थे, इस बार 2 मैचेस है, अगर बाय चांस एक भी हार गए तो सीरीज जीत तो नहीं सकते, फिर देन इट कम्स टू ड्रॉ, एंड अगर साउथ अफ्रीका वो भी जीत गई तो एंड देन 2 मैच सीरीज में मार्जिन इज लो. सो आई थिंक वो भी एक पॉइंट है कि यू वांट टू प्रिपेयर द टीम. सो या आई थिंक स्टेक्स आर इन द अपकमिंग WTC सर्कल. आई थिंक गोना बी फन. हाँ यार, आई अग्री टू द पॉइंट, क्योंकि yes, Rohit Sharma, I think Ashwin as well, Jadeja as well, for instance, Ajinkya Rahane. I think slowly and steadily, जैसे हमने पिछले स्ट्रीम में भी बात करी थी कि यार किसी को भी हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दे सकते. आई थिंक देयर इज अ रीजन दीज गाइज आर स्टिकिंग अराउंड, क्योंकि हमें अब तक वो नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिला है. यस, ऋषभ पंत वाज माय नेम टू बी ऑनेस्ट टू गेट द टेस्ट कैप्टनसी ओनली बिकॉज of his experience in the test match circuit. Look, he's still pretty young. I don't think so. I think test match circuit mein Rishabh Pant is probably the best wicket keeper batsman in the world. And I think the stats say that as well. Rishabh Pant played a big part in India making the World Test Championship final. So I Yeah. think I would have given it to Rishabh Pant, but unfortunately he's injured. तो लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल को दे देना चाहिए. I still feel that test format में शुभमन गिल has to prove a bit. Yes, he Yeah. has scored those runs in Australia, but the sample size काफी small है फिलहाल. So I think Hmm. it's a good decision to just stick with these guys, but I hope it's not for a very long time. Otherwise, हम वही cycle में घूमते रहेंगे. So I think Yeah. once we have pretty much all the fit players, Shreyas Iyer is back, KL Rahul is back, Rishabh Pant is back. Hmm. So I think then it is much easier to give these Yeah. guys, Hmm. pass the baton वाली जो चीज होती है वो करना. So I think Hmm. yeah, that's pretty much the idea and the thinking behind it. But टेस्ट Yeah. क्रिकेट इज द लीस्ट फोकस यार फॉर अस एट द मोमेंट. आई थिंक ये बहुत लंबी साइकिल है, 2 साल की साइकिल है. वी ओनली Hmm. हैव अक्टूबर में ना 5 अक्टूबर से मैच है फॉर आई थिंक द वर्ल्ड कप बिगिन. सो आई थिंक जुलाई हो गया, 3 महीने भी नहीं बचे यार अब तो. सो लेट्स सी Yeah. कौन से स्टेज पे आते हैं, बिकॉज उसके पहले हमें बहुत सारा ओडीआई क्रिकेट भी, बहुत सारा तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा तो खेलना है. एंड आई Hmm. थिंक समवन मेंशन्ड अबाउट साई Hmm. सुदर्शन ओवर हियर. व्हाट डू यू Yeah. मेक ऑफ दैट इमर्जिंग एशिया कप वाला जो भी सीरीज चल रही है? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? I mean, it looks good. I think Indian youngsters ne overall throughout this tournament, I think in terms of bowling, Angar Gekar, even I guess Nishan Sindhu, he got a fifer, and overall bowling, I think बहुत अच्छी हुई है, which has helped the batter to get that score easily. I think the game against Pakistan where Sai Sudarshan, I think that was also one of the finest displays in batting performances. I think youngsters को chances मिल रहे हैं, and I think because India has that luxury, कि इतने सारे teams, इतने सारे players को chance मिलता है, because I think we will be having the West Indies ODI series as well, and then Asian Games के लिए भी हम जो squad लेके जाएंगे वो अलग होगा, and then now the emerging Asia Cup जो youngsters के लिए chance मिलता है. So I think overall it's good, but and India Pakistan will be facing each other. So I think Yeah. अभी तो पता नहीं अब कितने rounds हो जाएंगे अभी, because I guess five I am assuming this year. एक already हो चुका है. 4 more on the cards, assuming final, and 2 Asia Cup में खेलेंगे and World Cup. So yeah. So there's a Yeah, lot of stuff going up for India Pakistan. हाँ, बट हम तो चाहते तो एक ही यार, हमें खाली एक ही रिजल्ट से मतलब है, विच इज ऑन द Yeah. 15th ऑफ अक्टूबर. सो आई थिंक उसके अलावा जो भी रिजल्ट आया हम उतना स्ट्रेस नहीं करेंगे उसके बारे में. आई थिंक वर्ल्ड कप वाला जो रिजल्ट आएगा वही Yeah. एक खाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट गेम है. बट या आई थिंक साई सुदर्शन यार बहुत बढ़िया बैटिंग करी है. आई थिंक टेम्परामेंट जो है ना ये बंदे का एट दिस एज, Mm. he showed it I think in the IPL, then he moved on Yeah. to the TNPL. वहां पे he scored consistently big runs as well. So I think he's on the right path, and the added benefit is he is a left-hander. I think बहुत टाइम बाद हमें एक as a क्या कह सकते हैं, Yeah. as a really calm and composed left-hander मिला है. I think
Rishabh Pant is a bit, Ishan Kishan as well from that mindset कि Yeah. यार नहीं हमें जल्दी रन बनाते हैं. I think he has that calm shoulders कि मैं लंबी innings खेल सकता हूँ. So I think Sai Sudarshan, Hmm. big prospect. Uh, let's see how his trajectory goes. But I Yeah. think I agree with the point that he could be in the क्या बोलते हैं reserve players बोलते हैं standby players for the Asia Cup. I think there's no harm keeping a left-hander, a proper left-handed batter Hmm. in the squad. What do you think? Yeah, maybe, but I'm not sure ki if he's part of the Asian Games. I mean, if he's part of Hmm. that, I think फिर then it's not possible for him to be part of Asia Cup. I think ये एक मुश्किल है. Scheduling का एक बहुत बड़ा problem होता है because World Cup के लिए जो team होगी, that players will not be part of the Asian Games, and then फिर अब Asia Cup and Asian Games के लिए जो players है, can they play both the cups? I think that's one thing वो एक देखना पड़ेगा. But I'm not sure is he part of that. If he's part of that, I'm not sure कि can he play for the एशिया कप एज वेल. सो एक ये एक चीज है. बट ये आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है. आई थिंक एशिया कप, एशियन गेम्स, आई मीन या आई थिंक एक्साइटमेंट भी है उतना, थोड़ा डर भी होता है. मल्टी नेशन टूर्नामेंट, देयर हैव बीन टाइम्स वेयर the name of India has been on stake. I think अभी no, let's be very honest. Hmm. पिछले एशिया कप भी अब थोड़ा इट्स लाइक कि पहले हम 2018 में जीता था, उसके बाद आई थिंक वो भी that was one of the surprise exits as well for India. And after that World Cup, WTC, what do you feel यार? I mean upcoming times में multi-nation tournament, I mean कितने कितने इस साल, I mean numbers के हिसाब से बताओ, how many multi-nation tournaments will India win in 2023? अरे यार फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट आई थिंक एज लॉन्ग एज एक हमें एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है इन द स्क्वाड एंड इन द स्ट्रक्चर एज वेल आई थिंक तब तक it's fine. I think right now there are just two focuses. One is जो T20 side अलग से बन रही है for the 2024 Hmm. World Cup. I think that should be Yeah. one focus and the major focus has to be the 50 over World Cup जो कि अभी Hmm. शुरू ही होने वाला है यार. देखते देखते पता नहीं चलेगा कब दिन आ जाएंगे and suddenly it's 5th of October. So and yeah, I Yeah. agree with Rahul's point कि आजकल के promos थोड़े वो हो गए and I would have preferred अगर आप शंकर एहसान लॉय को बोल देते दोबारा एक गाना बनाने के लिए जो लास्ट इंडिया में बनाया गया था. एटलीस्ट Hmm. वही एक लकी चार्म हो जाता हमारा. बट या बट कमिंग बैक टू दैट साई सुदर्शन वाला पॉइंट यार, आई एम स्टिल नॉट रूलिंग आउट ओनली बिकॉज बीसीसीआई एक चीज तो जरूर करती है कि देयर इज वन सरप्राइज सिलेक्शन ऑलवेज इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप स्क्वाड. Hmm. Suddenly out of nowhere you will see someone like Vijay Shankar जो पिछले बार इतनी बात हुई थी, and even though Ambati Rayudu was dropped, he shouldn't have been dropped. But I'm still not Yeah. ruling out like a surprise selection जो बीसीसीआई बोले कि यार हमें तो इस प्लेयर को खिलाना ही पड़ेगा या लेके जाना चाहिए because he's in form. So let's not rule out anything at this moment. Yeah. स्क्वाड तो चेंज होगी, मेरे को लग रहा है एक दो चेंजेस तो आएंगे फ्रॉम दैट एशिया कप में जो भी जा रही है. एशिया कप क्या, एशियन गेम्स में जो भी But स्क्वाड then, जा रही है. yeah, आई थिंक ये जो एशियन गेम्स का भी स्क्वाड अनाउंस किया उसकी वजह से थोड़े कंफ्यूजन भी है बिकॉज जो प्लेयर्स नहीं है वी आर काइंड ऑफ अज्यूमिंग दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप सेटअप. सो दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट डू यू फील कि जो पिछले साल भी हमारा T20 का वर्ल्ड कप था, आई गेस उसके पहले एशिया कप था T20 का. सो एंड देन as for India and even for many Asian teams, specifically India, the scheme is कि आप जो squad Asia Cup के लिए खिलाते हो, that's most likely your setup for the World Cup. So you feel the same कि इस बार जो Asia Cup पे most likely will be playing like the likes of बाकी team तो same है. The questions will be the availability of Shreyas Iyer or someone like Jasprit Bumrah. So you feel this same thing will happen in course that कि जो Asia Cup में होगा is most likely to be part of World Cup. And in that scheme you feel कि यार अब अगर शिखर धवन is not part of Asian Games, then as a backup opener I think none other than Mr. ICC for India. नहीं यार, आई डोंट नो वेदर शिखर धवन इज इन देयर प्लान्स और नॉट, बट या जो एशिया कप में स्क्वाड जाएगी आई थिंक दैट विल बी प्रीटी मच 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की स्क्वाड. एंड दैट Hmm. हैज बीन ओवर द इयर्स आई थिंक द सेम थिंग. आई थिंक एशिया कप में जो पिछला एशिया कप हुआ था T20 वाला, वर्ल्ड कप के पहले जो स्क्वाड, आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच Yeah. सिमिलर एज वेल. सो आई थिंक दैट इज द लाइक द ब्लूप्रिंट कि यार हम ये वाली जो स्क्वाड है इसमें शायद थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए. बट या आई थिंक द स्क्वाड विल बी सेम. एंड ऐसा ना हो कि यार if Bumrah is not selected or say a Shreyas Iyer or a KL Rahul is not selected, there is Hmm. still a very high chance that they could come in the World Cup squad only because these are Yeah. big names and important players. So ऐसा हो सकता है कि यार these guys are dropped only on the fitness issue या जो भी match fitness वाला issue है उसके ऊपर. But I'm Yeah. not ruling out. I think the best squad will be selected. एक दो थोड़े सरप्राइज नाम आ सकते हैं, you don't know, क्योंकि जो एंगल से मैनेजमेंट देखती है वो एंगल से हम नहीं देखते. So hopefully that's not that's the case. Yeah. And
the thing which is important is we need to win this round robin wala format. Yeah. Let's not forget ये सिस्टम चेंज हो गया. इट्स नॉट ग्रुप स्टेज एनी मोर. हमें 9 मैचेस खेलने पड़ेंगे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 टीम है तो 9 मैच तो खेलने पड़ेंगे. Mm. एंड या द टॉप 4 गोज. अर्ली प्रेडिक्शन अगर मैं मांगू तेरे से, मैं थोड़ी स्क्वाड्स वगैरह देख रहा था एंड चैट में भी, इफ यू गाइस कैन जस्ट लेट अस नो कि क्या Yeah. लगता है टॉप 4 क्या रहेंगी टीम्स फॉर द वर्ल्ड कप. Yeah. Just to add, before I answer this one, Abhinav, Australia 4 down. या The सो latest is of Travis said, I think Mark would 3. I think really, as we were discussing before, कि अगर 4 wicket आज मिल गए, Abhinav, one more they are halfway through, but let's see. I think वो एक चीज है. But coming to your question, I think really tough, because I do feel like कि comparatively अगर कुछ टीम जैसे the likes of New Zealand or even I would say Pakistan for that matter, although they played the final in the concluded T20 World Cup, but we weren't expecting them. But जैसे थोड़ा format बढ़ जाता है, you look at these teams and you look the setup. For example, just go with someone like New Zealand. I think Kane Williamson, Devon Conway, then the likes of Glenn Phillips, bowling to Team Saudi and all. They look like giants of the game, and that's why I think final भी खेला था 2019 में. So बहुत सारे teams, especially I mean, look at England. Johnny Bairstow is gonna open for England in the upcoming World Cup. So very difficult, but just I will go with top 4 rather. I mean, final बहुत मुश्किल. I do feel like England, India. I do feel कि South Africa will make it, and one of Australia or Pakistan might be in the top 4. What about you? आई जस्ट फील इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दैट विल बी माय. क्योंकि मैंने कल ही सोच लिया था, मैं जब टेबल देख रहा था, आई जस्ट फेल्ट वो जो न्यूजीलैंड वाला स्पॉट है वो शायद मेरे को थोड़ा वो लग रहा है कि यार पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, ओनली बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड कप इज इन इंडिया. आई डोंट नो Yeah. वेदर दे विल फीचर. अगर आगे तो मजा आ जाएगा. आई थिंक अगेन द सेमीफाइनल कुड बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इफ इंडिया फिनिशेस फर्स्ट Hmm. एंड पाकिस्तान फिनिशेस फोर्थ, यही होता है ना, 1 वर्सेस 4 होता है कि 1 वर्सेस 2 होता है. As if? No, I didn't get that. जैसे 1 2 3 4 में, जैसे इंडिया पिछले बार आई थिंक 2019 में टॉप 2 में फिनिश करी थी या कहीं तो फिनिश करी थी, देन वी फेस न्यूजीलैंड. सो अच्छा हाँ वैसे no I don't know. I think it's more like कि yeah I guess who was the top. I guess 2 versus 4 होता है and 1 versus 3. I think something like अच्छा, that हाँ, was फिर the भी setup ठीक है. last time. Not sure about this time because last time England I guess they were at the 4th position in the हम्म 2019 World Cup and India top पे थी if I'm not wrong. I guess India or New हम्म. Zealand one of them. So 1 That's 2 why I'm 3 4 saying something like that. But yeah इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड. हाँ, मेरी भी यही है. yeah. आई थिंक वो जो फिफ्थ वाला फोर्थ वाला स्पॉट है न्यूजीलैंड वाला, आई थिंक उसी में वो है. बट आई Hmm. थिंक बाकी 3 टीम तो जा ही सकती है. आई थिंक डिफेंडिंग चैंपियंस है इंग्लैंड, सेमीफाइनल तक तो चले ही जाएंगे. एंड जो ब्रांड के क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक लेट्स नॉट रूल देम आउट एट ऑल. ऑस्ट्रेलिया बिकॉज Hmm. ओनली बिकॉज इट इज ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नॉट रूल ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ एनीथिंग. I आई think थिंक एक और चीज I think आपने नाम ले ही लिया. I was also thinking yesterday when I guess couple of days back Australia batting कर रहा था. I was just assuming अगर ऑस्ट्रेलिया का वनडे सेटअप देखे they might open. अगर डेविड वार्नर को नहीं भी लेके आए, their opening will consist of someone like Travis Head and Mitchell Marsh, then Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Steve Smith, Mitchell Marsh, Cameron Green. That is the kind of setup with so many bowling options. India में all-rounders, I think we all know the value of all-rounders. So their setup looks good, but कैसे decorate करते हैं, I think that will matter a lot because no more Aaron Finch. तो डेविड वार्नर को भी लेके आना है कि नहीं, that are obviously their concerns, but looks good. Good problem for them to go through, but I think बहुत सारे teams का, as we mentioned, I think even South Africa, I think they should go well. I think last time we can't say that by the barest of margins. I think Netherlands के साथ नहीं आना चाहिए था, but that's what cricket has been. But they should make it. फॉर्मेट I चेंज don't है think यार. मुश्किल होगा. फॉर्मेट चेंज है, फॉर्मेट अलग है. आई थिंक प्लेयर्स अलग हैं. आई थिंक वी हैव मूव्ड Yeah. ऑन, एवरीवन हैज मूव्ड ऑन. जो भी 2022 का वर्ल्ड कप था, कि कब हुआ था T20 वर्ल्ड कप, 2022 में हुआ. हाँ. तो आई थिंक काफी टाइम हो गया. आई थिंक साल भर तो हो गए अभी, आई थिंक फॉर द वर्ल्ड कप. सो या आई थिंक लेट्स सी यार क्या होता है. क्योंकि पहले तो स्क्वाड हमें चाहिए, ढंग की स्क्वाड चाहिए. बिकॉज अगर स्क्वाड ढंग से नहीं आई थिंक देन देयर इज अदर डिफरेंट रीजंस टू टॉक अबाउट एज वेल कि यार उस पे एक अलग स्ट्रीम कर लेंगे हम. बट yeah, Australia 110 for 4 at the moment. Talking about the Ashes, still trail by 165. आज के दिन में और भी 14 ओवर बचे हैं. सो आई डोंट नो पूरे हो हाँ. पाएंगे. आई थिंक हाफ एन आवर का, 15 मिनट से हाफ एन आवर का आई थिंक गेम बचा है. सो आई डोंट थिंक 14 ओवर्स तो हो पाएंगे. बट या आई थिंक You feel like कि lack of clarity from Australia as well because the all the focus is कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगा या फिर ये मैच ड्रॉ हो पाएगा. So Australia I think they are also confused and I think as a I'm not sure कि as a
cricketing team, I think that's something you have to avoid in this kind of situation. It's not like Australia first time is situation mein hoga, but I think lack of clarity over how do you want to go in this situation. I think it seems because first innings they batted really well, and now when the track is good to bat on, I think they shouldn't losing wickets. And in this situation, especially when you want to bat in a way where you don't want oppositions to give the amount of chance to bounce back and win the test from that situation. I think थोड़ी तो प्रेशर में हो गया ऑस्ट्रेलिया ओनली बिकॉज आई थिंक द बेस्ट टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया टू एंड दिस सीरीज वाज इन द प्रीवियस गेम Yeah. जब दे वर 240 फॉर 4. आई थिंक 100 रन और बना लेते, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वुड बी विनिंग दैट गेम. आई थिंक लास्ट 6 विकेट्स इट वाज वेरी इजी टू स्कोर those 100 runs. I think Mitchell Marsh ka wicket and then that Mark Wood spell got England back. Otherwise, pretty much Australia dominant kari thi. About this game, I just feel they did not bat really well, and there was nothing in this pitch. To be honest, it was a bit flat. England was bowling मेरे हिसाब से I think सही line और length bowl कर रहे थे, and they got consistent wickets. ऐसा नहीं कि Yeah. बड़ी partnership आई, थोड़े starts मिले I think ऑस्ट्रेलिया में, but किसी ने convert नहीं करा. I think 51-52 was the highest score in the innings, and I think 4 or 5 players got close to 40 odd ka score as well. So I think किसी ने convert नहीं Yeah. करा, so maybe that could be the reason. And also the thing is they are not playing with the spinner. जब मोइन अली को थोड़ी turn मिली थी मेरे हिसाब Yeah. से in the first inning. So yeah, could be multiple reasons, but yeah, I think game अभी खत्म नहीं हुआ है. Australia just have to bat time यार मेरे हिसाब से. I don't think they will give England अगर target देते भी हैं तो बहुत बड़ा target दे देंगे. I don't think Yeah. so. But that's the point. Today's last half an hour, I think if they get one more, they just need one session Yeah. to bowl. क्योंकि हमने 1.5 बोला था. Now the Travis Head is gone. They just need one session to get Yeah. those 5 wickets or maybe 6 wickets. It's 5 down. 5 down, okay. Yeah, Okay. there we go. I think और Yeah. हम अगर ये स्ट्रीम 1 घंटा बढ़ा दे तो you never know. I think all हाँ out ही हाँ हो जाएगी. possible है यार. I think let's not rule anything out. But is it because scoreboard में दिखाया था, but I'm not sure कि अभी तक कुछ अपडेट हुआ है, but it was showing कि 5 down, but not sure why. I think ये अंकित का खराब है नेट, मेरा खराब है नेट. नहीं I was just looking at the scoreboard. But अभिनव aside एक और जो लीग चल रही है, हाँ, and I think अंकित का the नेट खराब है. stakeholders are too happy with the league. I think अंकित स्कोरबोर्ड हटाने की दिखाने की बात कर रहा था. ट्राई कर सकते हैं. Yeah, I mean, yeah, we can just a second. ट्राई करके देखेंगे. रुक जा, देखते हैं. स्क्रीन शेयर ही कर Yeah. पाऊंगा मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाऊंगा. Yeah. विंडो में चल ठीक है, ये करके देखते हैं. दिख रही है अभी इसमें तो हम क्या ही दिखा पाएंगे यार. Yeah. ये तो उसका है ना, क्या बोलते हैं, Yeah, India, West Indies. इंडिया वाला ना. हम आई थिंक उसके बिना दूसरा वाला ट्राई करके देखते हैं. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यार, तो प्लीज थोड़ा वो कर लेना. चलो ठीक है, हमने क्रिक बज ही लगाया. अभी हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है. कहाँ गया यार दूसरा 5वां विकेट? दिख क्यों नहीं रहा मेरे इसमें. No, I guess it was a review. So yeah, I mean, I thought कि it has overturned. So yeah, I think 4 down, but pretty sure. But यार comments भी थोड़े ले लेते हैं. I think उसी बीच as we display the scoreboard, I think Nasiruddin is saying कि पाकिस्तान, अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश शायद एलिमिनेट हो जाएंगी. Abhinav, one of the names, who would you pick? I mean, अगर Sri Lanka should go well, but I'm not sure. Top 4 बहुत मुश्किल है. I mean, because बाकी टीम्स का भी कद बढ़ जाता है. Obviously, Asian conditions में होगा. But you feel कि Vanindu Asaranga and Thiksana will just, as a spinners, take Sri Lanka into that top spot to get them through in that playoffs. What do you feel? श्रीलंका इज माय सरप्राइज पिक, क्योंकि जो अभी ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं वो आई थिंक दैट इज रियली गुड. एंड let's not forget they have come through this qualifiers as well, so I think that is one added advantage तो नहीं कहूंगा, but they have that winning run वाला जो है for the ODI World Cup. I think they have it in them. So yeah, I think, but I still feel वो middle order थोड़ा lag कर जाता है, only because there are not consistent players. थोड़ा change करते रहते हैं their lineups as well. Bowling looks good. Bowling I cannot complain. I think bowling looks good मेरे हिसाब से. So but yeah, I think I'm a surprise, but I still don't feel they'll make it to the semi-final मेरे हिसाब से. Yeah, same. But Pakistan, I think that's one thing कि will they actually do it, because T20 का expected नहीं था, but one day का expected है. But
it still looks like कि जो बाकी टीम्स है उनका कद थोड़ा बढ़ जाता है, एंड हाउ पाकिस्तान विल प्ले स्पिन ऑब्वियसली आई थिंक वो भी एक चीज है जो श्रीलंका में ऐसा लगा कि उनका जो टॉप ऑर्डर है काफी हद तक एक्सपोज हुआ, बट ऑब्वियसली वी कांट judge them on that basis. But I think how they play against spin, because the likes of Afghanistan, India, or even Sri Lanka for that matter, I think they are gonna come with good challenge in the spin department. So I think Pakistan के लिए वो crucial होगा. बाकी तो I'm not sure कि how they will go, but yeah, I think one of the contenders as well for the top four. I think apart from that, बांग्लादेश घर पे बहुत अच्छी खेलती है. I mean इनके साथ अरे तो कहाँ इनके खेल घर रहे पे अगर वर्ल्ड हो? कप खेल जाए तो ये डेफिनेटली फाइनल खेलेंगे. बट या बट जैसे घर से हाँ, दूर तो we know what happens. या आई थिंक आई एग्री। आई थिंक बांग्लादेश घर में बहुत बड़े शेर है। आई थिंक इंडिया के Yeah, बराबर ही शेर है वो घर में। आई थिंक दे कैन बीट लिटरली एनीवन इन ऑन yeah, एनी गिवन डे। अरे यार तू ही बताना यार, लास्ट ओवर में हैट्रिक लेने के बाद भी इफ यू कैन विन द गेम, सो आई yeah, थिंक दैट इटसेल्फ शोज हाउ बिग यू आर इन योर होम कंडीशन। सो yeah. बट या आई थिंक And ओवरऑल तो मेरे को नहीं लग रहा। आई थिंक इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया शुड बी mm, क्वालिफाइंग। वही है यार, फोर्थ स्पॉट का ये कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये तीन ही बचती हैं। उसके अलावा तो यू डू नॉट mm, एक्सपेक्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, और कौन, नीदरलैंड्स एंड वन मोर टीम। और कौन सी टीम है यार? और एक आखिरी टीम बचती है ना कोई तो। yeah. हम्म, नौ नौ टीम्स हो गई, तो 10वीं टीम कौन सी है? Netherlands, अफगानिस्तान Netherlands, होगी like ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। सो yes, Afghanistan. या, सो अफगानिस्तान से यू डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू You मेक know, we सेमी। were expecting from Afghanistan a lot, but last time तो I think एक मैच भी नहीं जीते. तो उनका ऐसा ही होता है कि we expect now something from them, then they don't perform. I think Afghanistan, I think they are one of the teams जो बहुत बेहतर के लिए, but I think they should start winning World Cup matches as well. भले 2 or 3 matches out of 8 or 9, but at least something on the board, because when they play against Bangladesh in a bilateral series or against Sri Lanka, they look like one of the teams. I guess Sri Lanka ke against, I guess they played recently, and I guess Bangladesh and even Sri Lanka, but they look like a good team. जहाँ पे it's not like कि 150 पे निपट गई, then opposition chases it down. That's not the scenario. Properly 280, 290 वाला match, but I think it's time for them to convert all their individual brilliances or team brilliances into wins. That's the one thing. But Australia, England. अभी ना अगर if one of the teams who may not make it, who will be it from England and Australia? I just feel it could be England, out of England and Australia, who don't make it to the semi. अगर क्योंकि अगर ऑप्शन ये दो है खाली, तो I don't think because Australia have that, क्या बोलते हैं, that experience, that temperament to win Hmm. big games मेरे हिसाब से, and they can literally Yeah. do it from any condition. So I am not ruling Australia at all. मैं थोड़े वो देख रहा था कि और कोई इंटरेस्टिंग कोई ट्वीट चल रही है ट्विटर पे, मैं तो देख ले हम जरा। So And let's actually even discuss about कि because हालांकि it will be too early because 2 साल बाद फाइनल खेला जाएगा. But WTC अभी लास्ट टाइम तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया काफी चीजें हुई जहाँ पे बेसबॉल बहुत लेटली आया एंड ऑल, एंड देन लॉट ऑफ स्टफ. साउथ अफ्रीका couldn't make it. But what do you feel इस बार? Obviously I guess Pakistan as of now will is currently on top with one win, but what do you feel like कि इस बार तो बेसबॉल पहले मैच से चालू हो गया है, but they have lost 2 matches as well. So with account that, what do you feel like कि इंडिया का सफर कैसा होगा? And then top 4 बता दो, let's then reap into later top 2. आई डोंट नो यार, टू बी ऑनेस्ट। ये 2 साल की साइकिल है ना, इसलिए दैट इज द Yeah, ओनली रीजन आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि कौन हो सकते हैं टॉप 2। बट अगेन यार, बीइंग द चैंपियंस, आई थिंक आई एम नॉट रूलिंग ऑस्ट्रेलिया एट ऑल, ओनली बिकॉज true. they always find a way to win the big games. I Yeah. think अगर 2-2 हो जाती है ना सीरीज, आई एम स्टिल बैकिंग ऑस्ट्रेलिया टू बी द फेवरेट्स टू विन द एशेज फॉर सम रीजन। आई Yeah. डोंट नो व्हाई, बट जो ग्राउंड पे मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया ने वही ग्राउंड पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। सो लेट्स नॉट Yeah. फॉरगेट, ओवल पे खेलने वाले हैं दोबारा, एंड ऑस्ट्रेलिया हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ टेस्ट मैच वेरी रिसेंटली देयर। तो Yeah. हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ये एशेज जीते, हार भी सकती है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस गेम। क्योंकि इंग्लैंड को ये मैच Mhm. जीतना सबसे पहले, हम आखिरी मैच के तो बात कर ही सकते हैं, बट इंग्लैंड हैव टू विन दिस गेम। एंड फॉर Yeah. सम रीजन आई आल्सो वांट इंग्लैंड टू विन दिस गेम, क्योंकि वो फिफ्थ वाला टेस्ट मैच देखने में मजा आएगा। अदरवाइज Mhm. इट विल बी लाइक अ डेड रबर प्रीटी मच, तो वो शायद प्रॉब्लम हो सकती Yeah. है उस टाइम पे। या That's व्हाट true. डू यू थिंक? तेरे हिसाब से क्या लगता है टॉप 2 Yeah, दोनों? I think I'm not sure कि although baseball has came, but I think implementing that in Indian conditions, and more importantly winning in that kind of
Indian conditions में it's not gonna be easy, but I think maybe a couple of wins here. यहाँ पे तो I guess they will have to win at least one more match. I think अगर WTC के हिसाब से देखें, but Australia also one of the, again, they will be one of the favorites as well to go into the tournament. Not sure New Zealand. I think they played 2 match test series and then they expect to be part of WTC final. पहले time हो गया था because there was a kind of a huge gap between the percentage system and the point system. Yeah. लेकिन अब वो भी that has been minimized, so कोई additional advantage नहीं है. I hope South Africa should go well. They did well in the last cycle, so might be one of the teams in top 4 as well. Again, India, South Africa, Australia, इंग्लैंड पाकिस्तान घर पे रिजल्ट ला पाएगा कि नहीं, दैट्स बिग क्वेश्चन. हारती नहीं है बट they can't manage to win a game, so if they start getting that, I think can be one of the teams as well. But for now I think simply India, South Africa, England, Australia, one of top 4, but top 2 will be one of Australia. I think Australia इस बार भी फाइनल जाएगा. I'm not sure why, but feeling बहुत स्ट्रांग होती है कि ऑस्ट्रेलिया. इंडिया should do well. साइकिल इस बार उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है because what do you feel like? I guess we are playing Australia in Australia, na? I guess 4 or 5. We are playing South matches. Africa away. We are playing Australia away. Yeah, I think so. Yeah, and But Bangladesh, I guess. we play Bangladesh at home. We play England at So this home. is this West Indies, yeah, and West Indies as well. And New Zealand, I think. West Indies तो हम अभी खेल ही रहे हैं अभी फिलहाल. हाँ वही I was considering that. So New Zealand at home or New Zealand away? at home ही है शायद, if I'm not wrong. Yeah, I guess South Africa and Australia away. So yeah, South Africa, Australia away. Yeah, so 3 so away looks और like a good cycle. I mean, हाँ विनेबल साइकिल है देखा जाता है. एंड आई थिंक दिस टाइम अराउंड साउथ Hmm. अफ्रीका हम जब जाएंगे मे बी वी हैव टू बीट देम ओनली बिकॉज पिछले बार थोड़ा वो हो गया था. आई थिंक हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वो टाइम पे व्हेन ऑल दैट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका. सो हमें लगा था कि बहुत इजी साइड है, बट देयर आउट ऑफ नोवेयर वी हैड Yeah, मार्को यानसन और जो भी फास्ट बॉलर्स थे, रबाडा, मार्करम जो प्लेयर्स खेल गए. तो yeah. या बट लेट्स सी क्या स्कोर है. 113 ही है, चलो ठीक है. But I'm not a big fan of kind of 2 match series. I mean hardly it's very difficult. अगर 1 all हो जाता है then how can you get a result? I think एक टीम एक मैच जीत जाती है then they can't lose a test series from there. So यार ये थोड़ा, and इस बार साउथ अफ्रीका के साथ भी हम खेलते हैं. I'm not sure why. I think that was a bit surprising. I think this is one thing कि क्रिकेट में थोड़ा एक डायलेमा जो चेंज करना चाहिए कि यार everything from thinking from a broadcaster's perspective, I think that needs to be changed because I think Yeah. cricket fans, I think they deserve a lot of test cricket, I think, but that's one thing which needs to be changed. So let's see. I mean यार अभी एक और चीज जो थी कि I mean न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने, I'm not sure कि have they played a single match after the IPL. I can't recall personally. I'm not sure कि क्या वो is it because of players committing to the franchise leagues or बट स्केड्यूलिंग उन दोनों का बहुत कम दिखा. एंड अच्छी कंट्रीज है, बाकी हर टीम खेल रही है, श्रीलंका भी क्रिकेट खेल रही है, बट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो आर दे गोना प्ले द वर्ल्ड कप डायरेक्टली. हाँ यार पता नहीं, क्योंकि आई थिंक दैट्स द पॉइंट, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए कमिट कर गए ना ये प्लेयर्स इनके, बिकॉज वी हैव सीन आई थिंक मार्को यानसन इन दी मेजर लीग क्रिकेट. साउथ अफ्रीका में कौन से प्लेयर्स है इन द मेजर लीग क्रिकेट वाला जो टूर्नामेंट चल रहा है? देयर इज रबाडा, देयर इज नॉर्के, उनके 2 फास्ट बॉलर्स तो हो गए. देन देयर इज मार्को यानसन, उनका तीसरा फास्ट बॉलर भी हो गया. हेनरिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक, 5 तो ये 3 प्लेयर्स हैं. और कौन कौन है? डेवॉल्ड ब्रेविस भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डेवॉल्ड ब्रेविस है प्लेइंग फॉर न्यूयॉर्क वाली टीम. डेविड मिलर भी है ना आई गेस. डेविड मिलर, जेराल्ड कोट्स भी होगा. आई एम प्रीटी श्योर ही माइट बी पार्ट ऑफ इट. हां आई थिंक दैट्स द थिंग. एंड फॉर न्यूजीलैंड आई थिंक डेवन कॉनवे तो खेल ही रहा है विद द सुपर किंग्स टेक्सास वाली जो टीम है. बट I guess Ferguson is also committed to the one of the. Yeah, Lockie Ferguson is also playing, I think, for Los Angeles Knight Riders. Yeah. बहुत पड़ी है फर्गूसन को ये टूर्नामेंट में. इतनी मैंने देखी, थोड़ा हाइलाइट्स वाले देखे थे मैंने. बट नसीब भाई पूछ रहे हैं अंकित कहाँ से है तू, और मैं भी. Abhinav currently is from UK and I'm currently staying in Mumbai. So यार आप लोग भी बताओ आप लोग कहाँ से हो. I mean comment section में. I guess it's the first interaction in one of the viewers. I think जो आज joined हुए. So yeah, good to have you guys on the show as well. But Abhinav क्या लगता है? I mean ये गेम की बात करें तो हालांकि I guess 10 odd overs. I think I don't think उतने होंगे. 5-6 I'm assuming 45 overs तक खेल होगा. बट आई मीन कल 2 दिन में यू फील कि अगर 70 ओवर्स का खेल शुड बी सफिशिएंट फॉर इंग्लैंड टू गेट द रिजल्ट, और यू फील कि ऑस्ट्रेलिया भी लीड ले सकता है उसमें पॉसिबली? आई डोंट नो यार. आई थिंक
मेरे को तो डाउट है 2 दिन मिला के भी इफ दे प्ले 70 ओवर्स दैट विल बी अ बिग बिग अचीवमेंट, क्योंकि Yeah. जो फोरकास्ट है ना रेन का, बिकॉज मैं कल ही आया हूँ मैनचेस्टर से एंड आई जस्ट सॉ जो आते टाइम जब मैं निकल रहा था, क्योंकि मैं ये Yeah. मैच बस में देख रहा था एंड उधर कमेंटेटर्स भी बोले जा रहे थे कि यार दे जस्ट हैव टू ट्राई एंड फिनिश इट इन 3 days व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन इंग्लैंड। Hmm. पिछले मैच में भी आई थिंक हो गया था ऑलमोस्ट खत्म, बट थोड़ी बारिश आ गई थी बीच में, वरना डे 3 में खत्म हो जाता। बट या दे वर टॉकिंग अबाउट कि बहुत बहुत ही खतरनाक वेदर प्रिडिक्शन है फॉर डे 4 एंड डे 5। दे टॉक्ड अबाउट आई थिंक रेन, थंडरस्टॉर्म, जो कुछ भी गिर सकता है ऊपर से सब गिरने वाला है इन मैनचेस्टर, ऐसा ऐसी बात चल रही थी। सो होपफुली, मैं तो इसलिए चाहता हूँ कि ना गिरे, ओनली बिकॉज आई वांट इंग्लैंड टू विन दिस गेम एंड सीरीज 2-2 Hmm. हो जाए। सो Yeah. बस You और feel कोई। like I'm not sure कि I guess it was one of the test series. I think बहुत पुरानी होगी जहाँ पे one of the South African players, I think he was caught. I guess because one of I guess I'm not able to recall that, but उस test series में there was a kind of trend because the match was expected not to be played on all 5 days. एक वो trend था कि the team batting first उन्होंने सोचा कि हम भी declare कर ले, and the team batting second. Then they decided to declare it, and then फिर जो दो बाकी इनिंग्स थी उस बेसिस पे द रिजल्ट वाज एबल टू हैपन। आई एम प्रीटी श्योर ये कभी ना कभी इंग्लैंड में होने वाला है, या आने वाले दैट द वाज काइंड ऑफ मैचेस गेट डिसरप्ट। yeah that was England versus South Africa in South या Africa. एंड So आई गेस वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, आई एम नॉट श्योर कि नाम क्या है उनका, बट वाज आई थिंक ही वाज कॉट Hansi by Kroenke, in one of the I think scandals, if I'm yeah, not that wrong. was Hansi Kroenke वाला मैच, and I still remember that मतलब मैंने तो highlights देखे थे मैच के। I think Nasir Hussain was the captain and Hansi Kroenke was the opposition vice captain, Hmm. opposition captain, and toss पे भी I think जैसे टॉस हुआ we declare बोल दिया गया, and then I think South Africa said we declare as well, Yeah. and then it was like एक एक innings वाला मैच खेलेंगे हम। So yeah, that was really good, but हाँ I think unfortunately उसके बाद जो भी हुआ स्कैंडल वैंडल मैच फिक्सिंग वगैरह जो भी चल रही थी, वो आई थिंक उसके ऊपर एक प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट्री या कुछ तो बनी हुई है, Yeah. एंड दैट इज ऑन नेटफ्लिक्स। आई थिंक इट इज कॉल्ड बैड स्पोर्ट। या इट्स कॉल्ड बैड स्पोर्ट। आई थिंक अगर इफ कोई व्यूअर्स देख रहे हैं, Hmm. इफ यू वांट टू वॉच समथिंग रियली गुड रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड इट्स स्कैंडल जो भी चलते हैं पीछे पीछे, बैड स्पोर्ट Yeah. इज द डॉक्यूमेंट्री टू इज द सीरीज टू वॉच। उसमें Yeah. वन एपिसोड एक क्रिकेट का है, वन इज आई थिंक हॉर्स राइडिंग, वन इज आई थिंक आइस स्केटिंग, वन इज Formula 1, और एक इटली के फुटबॉल का है जिसमें Juventus was relegated to Serie B. So Yeah. I think that is I think a beautiful I think series to watch for sports lovers. Yeah. आई थिंक उसी बीच स्टम्प्स भी हो गया बातों बातों में इतने की Yeah, day 3 stumps. So yeah, I think as expected. I'm not sure is this the last ball of this test or we are gonna have yeah. something more stored in for cricket fans. England in the commanding position, yes. Yeah, But that's the thing. यहाँ पे जो देख रहे हैं or will England make the most of overhead conditions? You don't know, man. I think quite some batting left, and with plenty of rain around, you never know. yeah. So If you feel 4 wickets, I think England should be happy in the current circumstances. Yeah, I mean 4 ले लिए बहुत बड़ी बात है. बाकी because tailenders के तो we honestly we don't consider that as wickets. आप 2-3 ही विकेट एलेक्स कैरी, बट इस बार इंग्लैंड ने जो माफ कर आई मीन सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग खिलाई, आई थिंक अभी फेयर टू से दैट कि प्रॉपरली वो 6 विकेट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज समवन लाइक पैट कमिंस इज बैटिंग एट नंबर 10 who finished the game for Australia with the bat in first test. yeah, I think Australia का वही advantage है that they bat really really deep. Yeah, So I mean, हाँ यार possible तो है। I think Australia will be still happy यार, क्योंकि only 4 wickets down and they bat really deep जैसे तूने कहा। So yeah. let's see, but yeah, moving on, इंडिया के मैच में क्या चल रहा है? अश्विन is playing on 33, उनादकट is on 5। ईशान किशन कैसे आउट हो गया? अच्छा या गॉड डिसिल्वा, ठीक है। और क्या बात करें? पाकिस्तान के मैच के बारे में हमने बात तो कर ली है वैसे, बट या दैट वाज आई थिंक अ गुड गेम ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, क्योंकि वहां पे भी देयर वाज चांस कि यार बारिश वारिश आ जाए, इन द एंड नहीं आई। सो आई थिंक दैट वाज रियली गुड, एंड पाकिस्तान हैव वन अ टेस्ट मैच after In 365 days against the same opposition, hmm. At the same same country, ground, I guess. same ground, and by same result. I think they won by 4 wickets वहां पे भी Hmm. और यहाँ पे भी। So Yeah, could win under that belt, क्योंकि वो क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। I think it's not like yeah, Pakistan is playing really bad cricket. It's just that opposition has been much better and they've been commendable. hmm. I think इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड ने तो अचानक से वो बैस बॉल निकाल लिया था Yeah, पाकिस्तान में। So I think पाकिस्तान was at the receiving end वो टाइम पे। Apart yeah. from that, और कहीं मेरे को याद नहीं आ रहा जहाँ पे पाकिस्तान वाला लाइक आउट प्लेड कम्प्लीटली, बिकॉज
पाकिस्तान का साइकिल क्या है इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? I guess they will be playing again England at home. I think that's one thing. श्रीलंका का तो ये अवे सीरीज हो गया. उसके अलावा I guess they will be playing against South Africa away and Australia away. So I think वो दो टेस्ट सीरीज will define. I'm not sure कि South Africa may they may get a result. Australia I don't think so. 2-1 something like देखते हैं, that, or मैंने रख दिया they है। अह, सो अवे तो इतना ही पता है मुझे. श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका होम. आई गेस दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, I think न्यूजीलैंड तेरा एंड नेट खराब है। टीम. कौन सा टीम होगा विल अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. बट यार आई मीन इंडिया पाकिस्तान का भी अगर आई मीन अभिनव डब्ल्यूटीसी फाइनल, तो आई मीन इमेजिन द क्रेज फॉर दैट मैच. आई गेस इट माइट बी लॉर्ड्स, बट आई मीन एक अलग ही मजा होगा इफ दैट हैपेंस इन द या अपकमिंग टाइम्स. ट्रू, आई एग्री। या तो ये साइकिल है, आई थिंक। होम टेस्ट मैच पहले लिखे हैं, अवे टेस्ट मैच बाद में लिखे हैं। सो और या नीचे नीचे कौन है? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दैट इज स्टिल फाइन, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है तेरे को ये साइकिल देख के? व्हाट डू यू मेक ऑफ इसमें चांसेस किसके सबसे ज्यादा है? Oh, I mean, Australia, you look, they will be playing West Indies, Pakistan and India at home. अगर इंडिया की सीरीज बाजू में रखे, आई एम होपफुल वेस्ट इंडीज पाकिस्तान दे विल बी विनिंग. अवे में दे हैव वन 2 गेम्स इन इंग्लैंड. आई थिंक एशेस के हिसाब से नहीं, लेकिन डब्ल्यूटीसी के हिसाब से आउट ऑफ 5 मैच में से 2 मैच जीतना, आई थिंक दैट्स big thing. And possibly if they get a draw, I think they should be happy with the Ashes and the WTC. Sri Lanka away last time it was a draw if I'm not wrong. So I think that should be a competitive series. Against New Zealand at home, that will be a close one. So Australia in a tricky situation, but I think they will find way. Bangladesh मुश्किल है. England, Australia, West Indies, Sri Lanka के तो I mean imagine playing at England against England. West Indies, Sri Lanka. I am hoping for a clean sweep. New Zealand के against भी clean sweep, and I guess they will be winning in the Pakistan as well. India वाला I'm doubtful, they may win 1 or 2 odd games, but series जीतना थोड़ा मुश्किल है. So yeah, I mean बाकी half starting from India, what do you feel like कि India, I mean क्या होने वाला है इस बार? यार आई थिंक इट इज स्टिल विनेबल होम गेम्स यार, क्योंकि ये इंग्लैंड के साथ आई थिंक वी आर प्लेइंग 5 टेस्ट मैचेस। Yeah, न्यूजीलैंड के साथ मेरे को पता नहीं, बांग्लादेश के साथ 2 खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आई थिंक कितने खेल रहे हैं? 4 खेल रहे हैं, 3 खेल रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, या I 5 guess खेल रहे हैं। इस बार 5, this या time आई is थिंक 5. कुछ कुछ तो रूल आया था ना कि बीजीटी अगली बार Yeah, से 5 का होगा। सो या दैट इज पॉसिबल। आई स्टिल फील इंग्लैंड का ड्रॉ काफी हार्ड है यार फॉर सम रीजन, क्योंकि प्लेइंग न्यूजीलैंड अवे, इंडिया अवे, पाकिस्तान अवे, आई थिंक दैट इज स्टिल अ बिट डिफिकल्ट। क्योंकि मेरे इसमें देखें तो अपन लोग ऑस्ट्रेलिया का अवे लेग श्रीलंका दे कैन विन, इंग्लैंड दे hmm. आर ऑलरेडी प्लेइंग, एंड न्यूजीलैंड दे कैन विन एज वेल। सो एंड होम Yeah, पे तो ऑफ कोर्स दे विल बैक देमसेल्व्स कि यार हम हरा दें इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान yeah, को। बट आई डोंट नो, इसमें से मेरे को फॉर सम रीजन इंग्लैंड का ड्रॉ सबसे हार्ड लग रहा है। yeah. न्यूजीलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड दे प्ले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एट होम, वाओ दैट इज टफ। That's tough. एंड अवे दे प्ले इंडिया एज अभी वेल। भी कुछ उतने ही टफ लग रहे हैं जितने होम लग रहे हैं इनके न्यूजीलैंड के. या आई थिंक Like इंग्लैंड एंड बांग्लादेश, न्यूजीलैंड we know, I think we हम भी गए थे. I think अभिनव बांग्लादेश it's not a cup of tea, like कि भले या आप overseas team हो, like you can't rule them out. Abhinav, just look at the schedule. The team who is sitting at bottom of the table, they will be playing India, Pakistan, and Sri Lanka at home. अगर 2 सीरीज भी जीत जाए उधर से, and they will be playing against New Zealand, West Indies, and Bangladesh away from home. So might be one of the teams इस बार भी they should go well, but बांग्लादेश में भी रिजल्ट लाना पड़ेगा. I think that might be a challenging series. New Zealand में I think they will find ways to win, but should go well. South Africa ideally, but tricky है. But I think अगर इनका बस चले तो I think this might be one of the teams जो अपने सारे सीरीज जीत जाएगी. Yeah, but for some reason I don't know, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का ड्रॉ इतना हार्ड क्यों लग रहा है दिखने में? Yeah, I mean, look at New Zealand. I think Australia, England, South Africa at home, and India, Bangladesh, Sri Lanka. I think जो अवे है वो एशियन कंडीशंस में, और घर पे जो टीम्स ऐसी आ रही है कि दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन बाउंसी कंडीशन, स्विंग कंडीशन. सो आई मीन जाओगे कहाँ? लास्ट टाइम आई गेस दे वर नॉट एट द बॉटम ऑफ द टेबल, बट इन द बॉटम हाफ, समवेयर 8 or 9. बट इस बार तो आई मीन tough one. I think God bless. I think how they are going to find ways. Apart God from that, bless. what do you feel like? अरे देखते हैं, बढ़िया, लेट्स सी।
Yeah. एनीवेज आई थिंक अच्छी टीम थी. और कुछ बात करनी है तेरे को? एशिया कप में इट इज Yeah, I इंडिया think पाकिस्तान apart वन from that, साइड. I think Major League Cricket, I think थोड़ा attention draw कर लिया उसने भी. I think looks exciting brand. You feel like कि यार, I mean again one of the leagues जो आने वाले वक्त में थोड़ा हंगामा, kind of what South Africa T20 league did. You feel like कि something like the same for that. I don't know. I think the cricket played by the local players is not that good. क्योंकि मैंने कल लॉस एंजलिस की बैटिंग देखी थी. There Yeah. was Unmuk Chand. There was I think bowlers have impressed USA के, Hmm. but the batters have really let down. I think there's one Jaskaran Singh. There was Nitish Kumar. There was Unmuk Chand. बाकी I think other teams में भी also there are other players. I think एक मोनांक पटेल करके कोई तो है in MI New York. Yeah. Then there is Steven Taylor जो मुंबई की ओपनिंग कर रहे थे. Yeah. I think the batters have let down. Bowlers have done decent, I would say. Saurabh Netrawalkar. Then there was Harmeet Hmm. Singh. I think these guys Yeah. have done well. Ali Khan has done well as well. But yeah, I think Hmm. still a long way for Major League Cricket to Yeah. ये अभी तक वो recognize T20 league बनी नहीं है. Let's not forget. So I think Yeah. I don't know. Maybe if more money is invested, then because players तो बहुत अच्छे हैं यार. I think if you see the Yeah. overseas players, I think they have been the Hmm. top names जो world cricket में I think they play everywhere. They have all come together to play this game. I think South Africa की तो पूरी टीम ही उधर है. West Indies के big names. Russell played yesterday brilliantly. Then there was Sunil Narine, Kyron Hmm. Pollard. Then we had I think Russell. नहीं रसल का नाम ले लिया. There was one more Bravo. Dwayne Bravo was also there. Yeah. So I think these big names have taken, and I think Aaron Finch तो commentary से बाहर आ गए. So I think uh, the teams are really good. मेरे हिसाब से तो I think वो कौन सी टीम है वो जिसमें शादाब खान है? San Francisco Unicorns. I think they He's are. the captain, no? I don't think he's the captain, but कौन है कैप्टन वो टीम में? अरे वो टीम सबसे स्ट्रांग लगी मेरे को अब तक. आई थिंक ओवरऑल सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की जो टीम है, आई थिंक दैट इज द स्ट्रांगेस्ट इन माय ओपिनियन, जिसमें कोरी एंडरसन एंडरसन सब खेल रहे हैं. सो आई Hmm. थिंक रियली गुड टू सी कोरी एंडरसन बैक. आई थिंक he now has that US citizenship that allows him to play for USA as well. So I think ये Hmm. बहुत सारे players करेंगे to just settle in the Yeah. US and start playing for them after a couple of years. So let's see. Yeah. गौरव इज हियर. हाय गौरव, थोड़े लेट आ गए आप. भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, एशेस कम वनडे ज्यादा लग रहा है. यार वो तो आप अपनी टीम को बताओ ना कि टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहिए. आई थिंक आप ही की टीम ने इंटरेस्ट बनाया है इन दिस Yeah. फॉर्मेट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो चलने दो, वनडे चलने दो, बिकॉज अब तक जीते नहीं हो. दैट्स द ओनली थिंग. बिकॉज स्टिल आउट करने हैं 6 विकेट और ऑस्ट्रेलिया के विच Yeah. ऑन. आई थिंक सबको लग रहा होगा 2 दिन ही बचे हैं, बट ऐसे 2 दिन आने वाले हैं ना इन टर्म्स ऑफ द Yeah. वेदर. You will feel कि वो भी बहुत कम है. So maybe you would hope for a reserve day after day 5. So you never know. Yeah. Australia is still in the game properly, even though the scoreline doesn't say that. But Hmm. Australia just have to bat, and they bat really deep. So और उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें एक ही सेशन बहुत लंबा बैटिंग करना है. The forecast, the rain is predicted different times पे consistently. So I think वो एक इंग्लैंड के लिए खराब है, बिकॉज कोई ऐसा सेशन का टाइम नहीं है जिसमें देयर विल बी लाइक कंप्लीट सनलाइट या बारिश नहीं Yeah. आएगी. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. Yeah. गौरव सर है. और ये गिल यहाँ तो स्टैट पैड कर रहा है भाई जब कर. अरे आई थिंक गिल की हमने बात कर ली. स्टिल वेरी अर्ली स्टेजेस नंबर 3 का प्रेडिक्शन करना कि यार फेल होगा कि ये पास होगा. बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि शुभमन गिल हैज प्लेड इन दैट पोजीशन थ्रू आउट हिज लाइफ. सो for Hmm. Punjab as well, for India under 19, other जो भी गेम्स वगैरह खेले हैं अलग अलग डोमेस्टिक सर्किट में, ये स्टिल प्लेड नंबर 3. टाइम लगेगा थोड़ा, मे बी थोड़ा प्रेशर वेशर लग रहा होगा बच्चे को. Hmm. गौरव पंडित सिंह, क्रॉल इज द डिफरेंस इन दैट टेस्ट मैच. Yeah. हाँ यार, आई थिंक स्कोर कार्ड ही बता रहा है. व्हेन यू स्कोर 189 इन जस्ट 182 बॉल्स, आई थिंक यू आर प्रीटी मच द डिफरेंस इन द Hmm. गेम. सो लेट्स सी, बट स्टिल हैवंट वन द गेम. लेट्स नॉट फॉरगेट बारिश के चक्कर में यहाँ पे लग तो रहा होगा कि यार बहुत अच्छी धूप वूप निकली है. कल पता चलेगा कि Hmm. जब ये सारे कवर्स लगे होंगे ना, देन यू विल सी कि यार ये क्या हो गया. Yeah. यार लेट्स टॉक अबाउट क्रिस वोक्स. आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट जो गौरव ने खड़ा किया है. क्रिस वो वुड यू, who are like the most underrated cricketers in test match circuit for you in this generation, मतलब जो अभी खेल रहे हैं और maybe like playing for a long time.
मेरे हिसाब आई से थिंक फर्स्टली तो इस सीरीज में आई थिंक दो नाम मिल जाएंगे, फर्स्टली मिचेल मार्श एंड आई थिंक क्रिस वोक्स। आई थिंक लाइक व्हाट ही डज विद द न्यू बॉल, एंड आई थिंक गौरव ने भी बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि फ्लैट ट्रैक्स पे यू नीड काइंड ऑफ बॉलर्स हु कैन टेक विकेट्स व्हेन देयर इज नथिंग इन द पिच। आई थिंक और इस पिच में देखे तो अपार्ट फ्रॉम अनइवन बाउंस आई एम नॉट सीइंग मच मूवमेंट, एंड ऑब्वियसली बाउंसर्स तो एक होता है बट इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम इट वर्क्स, बट he's someone who has done really hard work. I think 2019 World Cup maybe in the home conditions, World Cup घर पे था, he did really well. But इस Ashes में with the bat, with the ball, with the bat to he did well in the Headingley match. But this Test match, I think with all at stake, I think he's going to put everything for the team and already contribute किया. अब तो match होगी तो ही contribute कर पाएंगे, simply to put out या what can we expect. But what do you feel like Chris Wokes? The bowling all-rounder, I think throughout the years, what do you make of him? आई थिंक इज ऑलवेज फॉर सम रीजन आई थिंक इंजरीज की वजह से ही इज ड्रॉप्ड या मे बी वो कम बैक जल्दी नहीं हो पाते. दे स्टिल रेटेड ऑली रॉबिन्सन बेटर देन क्रिस वोक्स फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई. मे बी बिकॉज ऑली रॉबिन्सन के पास शायद मे बी एक्स्ट्रा विकेट टेकिंग एबिलिटी है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दे आर प्रीटी मच सिमिलर. मेरे को लग रहा है क्रिस वोक्स इज स्टिल अ बेटर पिक. And if Yeah, he stays fit, I think he plays most of the games मेरे हिसाब से. So yeah. I think Chris Wokes is probably the one of the most underrated cricketers अभी recent times में. और बैट के साथ he's always been good यार. Let's not forget कि Mm. इंडिया के सामने I think he scored a century at Lords. At Lords, So I guess. Yeah. yeah, so I think Chris Wokes is very reliable with the bat, and he has been over the years. I think apart from the अगर team wise देखा जाए, अगर इंडिया की बात करें हम, who do you think is like the most underrated Test cricketer at this moment? Would you say Umesh Yadav was the one? No, I think I feel like कि home conditions में many people or many experts will rate him high कि यार अगर घर पे कोई विकेट्स लेने वाला चाहिए तो I think उमेश यादव, because इंडिया में I think I personally feel कि कोई क्रिकेटर underrated नहीं होता. I think सब क्रिकेटर की उतनी बातचीत होती है, बहुत मुश्किल होता है unless he's someone who doesn't play IPL and all. But I think that's fair truth. Like इंडिया में I think हर क्रिकेटर को I think सब उतनी पहचान है. That I think we are fortunate to get the kind of cricketers also. But I think इंडिया में बहुत मुश्किल है. But what do you feel like कि कोई है आपके हिसाब से underrated cricketer? I think even from past someone. आई थिंक मैं तो पास्ट का तो मैं क्या ही बताऊं यार. अभी इतना हमने पास्ट का Maybe टेस्ट. गंभीर. हम्म. गंभीर. आई डोंट नो. आई थिंक बीच में एक पैच आया था गंभीर का व्हेन ही वाज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स. आई थिंक 100 पे 100 हर मैच में बनाए थे. आई थिंक 4-5 मैचेस में गंभीर ने बनाए थे. सो या आई डोंट नो, ही इज अंडररेटेड क्योंकि वो काफी क्रिकेट खेल गया यार. एंड आई थिंक ही हैज बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम साथ में. सो Yeah, I wouldn't say he was underrated. I think he was still rated, but he wasn't rated very highly, and I think yeah, that could be the definition of that. So yeah. मेरा अंडररेटेड का डेफिनेशन इज क्रिस वोक्स ओनली बिकॉज ऑफ लाइमलाइट नहीं मिलती वो बंदे को. आई थिंक गंभीर हैड फेयर शेयर ऑफ हिज लाइमलाइट. राहुल इज सेइंग गौतम गंभीर इज वेरी अंडररेटेड. ओके, I एवरीवन हैज think देयर Gautam, ओपिनियन. yeah, but let's see. I think apart from that, I think what do you feel like कि other countries में से तो because थोड़ा और आसान हो जाता है, like for South Africa for that matter. I think what do you feel like कि कौन सा वो underrated cricketer है from the Proteas? फॉर्म प्रोटियर्स आई थिंक डीन एल्गर अभी तो कैप्टन है, बट आई थिंक एक टाइम पे ही वाज रियली अंडररेटेड व्हेन ही वाजंट आई Hmm. थिंक द कैप्टन एंड बस खाली ओपनिंग करवाते थे उनसे. वर्नन फिलांडर अनदर Hmm. नेम जो मेरे को लगता है कि ही वाज अ बिट अंडररेटेड. उसके अलावा कौन है? देयर वाज एशल प्रिंस. इतना लंबा करियर था नहीं उसका. मे बी जैक रुडोल्फ. उसका भी इतना लंबा करियर था नहीं देखा जाए तो. सो I don't know. Michael Clark. Okay, yeah, that's a good name. Yeah, Michael Clark. He was around the Australian white ball setup for a very very long time. So in the Test circuit, yeah, maybe Test circuit में अगर मेरे को underrated ऑस्ट्रेलिया में से बोलना है तो I would say Damien Martin. जो I think middle order में आके he scored those runs, crucial runs. And let's not forget 2003 World Cup final में Damien Martin की तो क्या ही innings थी. So more than Hmm. Michael Clark, I feel Damien Martin was a bit underrated. Hmm. There was Andrew Simons as well, but rest in peace, Yeah. Andrew. But I think there was Andrew Simons. There was one more player in that middle order, Mike Hussey. Yes, even though उसका नाम Nice. Mr. Cricket बोला गया है, but he Hmm. still scored like those important runs मेरे हिसाब से. So Stuart Clark, yeah, bowling में Stuart Clark could be the name. Yeah. और ऑस्ट्रेलिया में से तो बहुत सारे बोल सकते हैं यार. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया Yeah. हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट I ऑफ think बिग. even the likes of Sean Marsh, I think,
आई थिंक ही इज समवन ऑन जो वन. खेलते थे अपने टाइम पे आईपीएल में भी. आई थिंक ही स्कोर्ड वन या ऑफ द हाई स्कोरर्स फॉर पंजाब, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स टू आल्सो. आई मीन बहुत खूबसूरत बैटिंग होती है. रिसेंटली तो आई डू फील लाइक कि ट्रेविस हेड की भी उतनी बातचीत होती नहीं थी. अभी वो जाके पीपल हैव अंडरस्टूड कि कैसे किस तरह के प्लेयर है. बट आई थिंक एज यू मेंशन्ड, आई थिंक बहुत ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स है. इफ यू गो विद इंग्लैंड, आई थिंक व्हाट डू फील लाइक कि उधर भी बहुत सारे नाम आएंगे, बट आई मीन स्टार्टिंग विद आई थिंक हु इज द क्रिकेटर. इंग्लैंड में कौन है यार? यार इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी रही है ओवर द कोर्स. आई थिंक दे हैव हैड प्लेयर्स जो कि या कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करें टू द साइड. मे बी जेम्स विंस. जेम्स विंस कहाँ खेला है यार टेस्ट मैच क्रिकेट इतना? Yeah, but overall, like as a English cricketer, I think I feel like कि chances भी उतने कम मिले, but बातचीत भी उतनी हुई नहीं उनकी. I don't know. I think James Wins is still scoring runs in the county and जो भी T20 उनका blast fast होता है उसमें. I don't know. I think राहुल ने Ian Bell बोला यहाँ पे. But I people don't used think. to rate him high. Yeah, Like मेरे he was वाला, yeah, very highly rated. Yeah, I think he has over how many runs? 6,000, 7,000 test runs. Ian Bell. yeah, So I don't think he was underrated. Tim Bresnan, yeah, Tim Bresnan was underrated. I think Rahul ने वहाँ पे बताया. I think yeah. Tim Bresnan was underrated in my opinion. और कौन है यार इंग्लैंड की टीम में? I think let's see. I think bowlers में से मिल जाएंगे because it was all around Anderson, Broad, and the likes of हम्म, Monty Panesar and all. उसके अलावा उतने bowlers के I guess. But let's see. I think कौन bowlers में से भी uh, ग्रेम स्वॉन तो काफी रेटेड था यार. आई yeah, थिंक yeah, ग्रेम people स्वॉन used वाज to देयर rate him high. लीडिंग स्पिनर. सो आई डोंट नो ऐसा प्लेयर जो क्लच सिचुएशंस में से टीम को बाहर निकाल ले, व्हिच इज प्रीटी मच लाइक द डेफिनेशन ऑफ क्रिस वोक्स इन माय ओपिनियन. सो आई थिंक क्रिस वोक्स का तो नाम आएगा ही आएगा. आई थिंक व्हेनेवर Yeah. इट इज अबाउट अंडररेटेड प्लेयर्स. और कौन है? आई थिंक इंग्लैंड में से ज्यादा मेरे को याद भी नहीं आ रहे. ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया में तो और मेरे को नाम फॉर सम रीजन क्यों ही नाम याद आ रहा है अपने को. Yeah, India में I think. Ajit Agarkar would be another name who was a bit underrated. I think he had some crucial runs and wickets. I think वो एडिलेड वाले टेस्ट मैच था जो हम जीते थे जिसमें he took 6 for 47 or something. So Yeah. I think yeah. And I think Uh, one of his batting displays, I guess in England में he has a century or 90 something like yeah, that. So that yeah, too one at of Lords. the uh, yeah. But उसके अलावा I do feel like even Ishan Sharma at certain extent, I think उतनी उनको 8 में I remember 2008 और 2012 series, I think जितनी बातचीत वो जो rivalry थी between him and Ponting, but after that the pool of pacers India को भी मिले, like even Praveen Kumar I would mention, like he used to bowl really his swing, the way he used to bowl with any new ball. I think if irrespective of the Yeah. format, I think he was one of the bowlers quite underrated. बाकी तो बहुत कम है यार. आई मीन इंडिया में आईपीएल में से बहुत सारे हो सकते हैं, बट बाकी तो आई कांट रिकॉल जो बहुत 100 टेस्ट मैच या फिर 100 मैचेस के लिए इंडिया के लिए एंड हैज बीन नॉट रेटेड हाईली. सो या, Yeah. 8 डाउन. Jason Gillespie a good name. Yes, Jason Gillespie I would say he was a bit underrated क्योंकि I think वो नाइट वॉचमैन आया था अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी. आई थिंक ये तो अलग से एक पिक्चर बन सकती है उसके ऊपर जो जेसन गिलेस्पी ने किया था इन बांग्लादेश. सो yeah, I think या Jason Gillespie was a bit underrated. I recently met him as well क्योंकि मैं लॉर्ड्स वाले एशेज वाले गेम में गया था एंड यू जस्ट वॉकिंग पास्ट एंड वो दिख जाता है, दूर से दिख जाता है इतना लंबा. आई थिंक 7 फुट का तो क्लोज टू 7 फुट वो रियल लाइफ में लगे थे मेरे को. सो Jason Gillespie, I would say he was a bit underrated. एंड Stuart फ्रॉम वेस्ट McGill, इंडीज आई थिंक. क्या? वेस्ट इंडीज में से अगर कोई हो तो वेस्ट इंडीज में से तो आई मीन बहुत कम क्रिकेटर्स है वैसे. आई मीन वेस्ट इंडीज में से अंडररेटेड क्रिकेटर्स यार आई आधे थिंक लोग. हेटमायर को ये लोग ने अंडररेटेड बना दिया. आई विल से दैट. हाँ. बट द थिंग इज वही है, सैंपल साइज जो है ना उतना बड़ा नहीं है. आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग which is a bit questionable. बट क्योंकि हेटमायर के भी खुद से कांड करता रहता है कुछ ना कुछ. आई थिंक he has been around that controversy वाला area. So Yeah, um, I would say like I think Dwayne Bravo's brother, if I'm not wrong, Darren Bravo. I think the way he used to Darren bat, I Bravo. think yeah. I'm uh, not sure was he the brother of Dwayne Bravo or there's no yeah, he was. connection. Just अरे उनका surname. विकेट कीपर कौन था वो? उसका नाम बी से स्टार्ट होता था. some he was pretty short. He used to use GM वाले प्रोडक्ट्स यूज करता था. Wicketkeeper क्या नाम or है? that one. वेस्ट इंडीज का विकेट कीपर था. आई जस्ट रिमेम्बर.
He Let's he check he on he, Google. I he mean, was, I think, the 400 test victim of Harbhajan Singh, if I'm not wrong. Uh, क्या नाम था यार वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर का? आई थिंक ही वाज yeah, yeah. Just a आई second, थिंक I'm checking it शॉट on Google. इन Uh, हाँ, ये कार्ल्टन बॉग की क्या, हाँ, कार्ल्टन बॉग समथिंग, या सो आई थिंक ही वाज प्रीटी yeah, अंडररेटेड. कीपिंग वाज रियली गुड. He scored some crucial even runs. even Dinesh Ramlin, I would say, like Yeah, उसका भी नाम Yeah, है. Dinesh Ramdin is an underrated cricketer in my opinion. Yeah, Yeah, Dinesh Ramdin was good. Yeah, Carlton Bog was the name I was looking for. Thanks, Nasir भाई. यार जैसे कोई भी देख रहा था यार, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को yeah, सब्सक्राइब कर दो. हम थोड़ा अटक गए 2.58 पे, उसको थोड़ा बढ़ाओ आगे धीरे धीरे करके. yeah, फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर द गुड नंबर्स जो हमें इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मिल रहे हैं. रियली रियली mm, अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड couldn't have been possible अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते. तो थैंक यू सो मच एंड जस्ट कीप शेयरिंग द चैनल विद अदर पीपल. और लोगों को इनवाइट करो, उनसे भी हम बात करेंगे. नसीर भाई अपने दोस्तों को भी बुलाइए, हम उनसे भी बात करेंगे, आपके बारे में भी थोड़ा yeah, जानेंगे उनसे कि नसीर भाई कैसे है रियल लाइफ में, बताओ हमें. Rahul as well. Rahul, just keep sharing everything, whatever you feel. If you like the video, just subscribe and like the video and subscribe to the channel. Yeah. yeah. India 426 for 8. Ravi Ashwin का 50 होने आया है. Why do we even talk about Ravi Ashwin as a bowler here? I think any player, any batsman would love to have a Ravi Chandran Ashwin का test career. So I think that is enough I said would about say Ravi. like he's one of the smartest cricketer I think currently, or शायद बहुत सारे भी होंगे, but I think one of the smartest cricketer. I think the kind of the knowledge he puts into the game, like batting or bowling low. I think he deserves like कि बहुत deep analysis करते हैं हर छोटी चीज की कि ये बॉल में क्या होना चाहिए. So I do feel like कि बहुत सोचते हैं, but I think and it shows like कि उनके जो performances भी होते हैं, like वहाँ पे दिखता है कि इस efforts he puts into the every department. So yeah, I think he deserves a lot of credit. But I mean, yeah, Ashwin Yeah, over the sure, years, yeah. Indian conditions, maybe we are really blessed to have good bowlers like him. Exactly. Yeah, I agree. And hopefully, I think खिला लेते हैं यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. हमने स्ट्रीम के जस्ट पहले हमने बात करी थी कि अश्विन को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, सबने बोला था खेलना चाहिए. बट या डिफरेंट रीजंस. Hmm. नसीर भाई हम बताया तो था. आई थिंक अंकित इज फ्रॉम मुंबई. मैं भी मुंबई से ही हूँ वैसे, बट आई एम स्टडीइंग इन द यूके एट द मोमेंट. सो Yeah, आऊंगा जल्दी वापस मुंबई इन अबाउट लाइक कपल ऑफ मंथ्स. सो yeah. मैं आप भी लोग मुंबई. बताओ, I mean, आप लोग कहाँ से हो? But यस apart नसीर from भाई. that, I think अगर यार I mean actually ये topic में भी बहुत interest होता है because underrated cricketers and all I think. But I guess we covered all the countries. I guess New हाँ. Zealand. I think if going with New Zealand, I think बहुत कम cricketers है. I mean, उधर से the circuit of cricket I think has been not that great or popular I would say. But I mean, if New Zealand अभिनव क्या लगता है? I mean, कौन BJ Walting starting with? BJ Watling, yeah, probably I think top of the list. BJ Watling. I think underrated cricketers not just for New Zealand, like in the world, I would say. Yeah. जो करियर था उसका. But even the Nathan McCallum, Brendan McCallum की जो भाई है, I think the way he Cricket used to चला गया bowl, I भाई. think इनकी जो off spin bowling थी, it was proper like a mix up of a bit of pace as well. So he was also a smart cricketer and underrated. I personally felt like yeah, I think he was one of the underrated. या नसीर भाई, हम क्रिकेट में ट्राई करा रहे हैं. हमें हमें बात करने से खुशी मिलती है क्रिकेट के बारे में. सो हम कुछ ज्यादा वो नहीं सोच रहे, बट वी जस्ट लाइक टू टॉक क्रिकेट एंड जस्ट इंटरेक्ट विद न्यू पीपल हु लाइक क्रिकेट एज वेल. सो या हम ट्राई तो कर रहे हैं, काफी कुछ हम प्लान कर रहे हैं, बट या जस्ट कीप सपोर्टिंग अस एंड होपफुली विल रीच आवर टारगेट रियली सून इन द फ्यूचर. Akshat is here. Hi Akshat. India should declare now. 426 is a lot in the first innings. 426 क्या, 300 was also lot. 280 was also a lot. उसके ऊपर 280 के ऊपर जो भी नंबर है that is lot, क्योंकि दो इनिंग्स का मिला के if you add 150 I think that is enough against Hmm. West Indies. So लेकिन अभिनव क्या लगता है वेस्ट इंडीज फर्स्ट मैच में आई थिंक दे कुडंट रियली गो बिग इन बोथ द इनिंग्स. आई थिंक बॉलिंग भी बहुत साधारण थी. आई मीन I mean, can they think like कि 3 दिन? I mean, they I think because as a cricketer, I think everyone likes to bat, but knowing that कि tough conditions, I think if they bat really well, can somehow they get something out of the game. I think I'm not saying कि जीतेंगे या फिर draw कर पाएंगे, but I think positives too. I'm expecting Blackwood or Braithwaite and even जो Chanderpul है, this kind of players to get at least 70-80 odd runs or even Holder अच्छी batting करते हैं और Joshua D Silva. So you feel can they score at least 280, 270, 280 in the first innings? I think something from the game. I mean, yes, they can.
क्योंकि द आउटफील्ड इज मच बेटर दिस टाइम अराउंड. पिच भी आई वुड से कि बेटर Yeah. देन द प्रीवियस गेम. बट या दे आर नॉट रीचिंग 426 या जो भी 400 तक का मार्क तो नहीं लगेगा पहुंच रहे. बट आई थिंक वन ऑफ दो बैटर्स विल प्ले अ बिग लॉन्ग इनिंग्स आई वुड से, एंड कुड बी चंदर Yeah. पॉल. आई थिंक फर्स्ट मैच में बॉल बहुत अच्छी मिली थी यार. वो जो फर्स्ट इनिंग की जो बॉल थी अश्विन की, दैट वाज अनप्लेएबल मैं तो कहूंगा. Yeah. Otherwise, I think Chandra Paul has done really well in his career, short career so far. Uh, और कौन है? आई एक्सपेक्ट शे होप क्या क्रेग ब्रैथवेट टू प्ले अ बिग, नॉट अ बिग Mm. इनिंग्स बट लाइक अ कैप्टन इनिंग्स कि यार खड़े Yeah. रहो उधर थोड़ा पिच पे. यस दे वर Yeah. ट्राइंग टू डू दैट इन द फर्स्ट गेम कि यार हम जितना लंबा टिक सकते हैं सेकंड इनिंग्स में, लेट्स ट्राई अगेंस्ट इंडिया. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन दैट पिच जब जडेजा और अश्विन आपके सामने खेल रहे हैं. सो Yeah. या और क्या I think कमेंट. Chandrapol say, I think, yeah, I do agree. Like he should really get because youngster, I think, and playing against India in home conditions, I think there's a lot to take for him from the game, but how he bats, I think we and short selection भी थोड़ा ना, I think is questionable of West Indies. I think obviously it's tough, but it can be better, to go with to play the shots which suits the nature of the game rather than या playing something कि tempt हो जाओ आप कोई attacking shot खेलो when there's not a need. So that's something they should avoid. And Baki to let's say I think 250, 270, they should at least get that. I'm not sure कि India I guess 10, 12 odd runs I think वो I guess West Indies शायद all out कर ले, I'm assuming. But I think it will be interesting कि how West Indies goes because maybe 30, 40 overs of the game today I'm assuming will happen. So how West Indies go in that I don't will know. depend a lot. आई डोंट नो यार, पता नहीं. चलो बैक टू अंडररेटेड क्रिकेटर्स. राहुल इज सेइंग न्यूजीलैंड से नेथन मैकलम, बीजो वॉटलिंग. या बीजो वॉटलिंग तो है ही. मेरे को इसके बारे में बता यार तू. ये गायब तो नहीं हुआ? ही इज लाइक कमेंट्री वॉमेंट्री में घुस गया आई थिंक कार्लोस ब्रैथवेट. बट डिड यू रेट Yeah. कार्लोस ब्रैथवेट एज अ बिग ऑलराउंडर एंड द सेम लेवल एज लाइक ब्रावो और से पोलार्ड और एंड्रे रसल? I don't think so. Obviously, he won games. I think obviously final जीतना हर एक का सपना होता है या फिर you dream for that as a cricketing player. But I don't think so. कि and apart from the his innings against West Indies at Manchester, I can't recall like big moments in his cricketing career. So एग्जैक्टली. obviously, I think chances भी उतने नहीं मिले T20 format में. I think he could have done more than what he did for them. But obviously अब ये तो अब board and all की बात है कि sufficient amount of chances and all मिलना and all. बट उतना तो वो कर भी नहीं कर पाए बैटिंग एट नंबर 7 नंबर 8. एनीवेज आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू लीव अ मार्क बट हाँ आई मीन फाइनल जीता वो उनके लिए आई थिंक दैट विल बी द हाईलाइट फॉर हिज मे बी before he ends his cricketing career. I think that might be the moment unless there is something from his side to add और वेस्ट इंडीज डिसाइड कर ले कि वी वांट हिम टू बी बैक इन द सेटअप. सुनने में आया वैसे था अभिनव की रसल वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द टीम बट आई एम नॉट श्योर कि अब वो बोर्ड भी बिकॉज बोर्ड की तरफ से रिस्पॉन्सेस आर एंड गुड. आई थिंक जो सुनील नारायण के साथ भी रहा है. या आई एग्री. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज yes, if Andre Russell शुरू करता है कि let's focus on West Indies का जो national cricket है अभी, I think a lot of players will follow then. उसके बाद for some reason I can see Chris Gayle, Karen Pollard, Carlos Brathwaite for example as well. Even though I did not rate Carlos Brathwaite उतना, like I agree with you. जो तूने 2 points बोले ना, I think 2 ही games है मेरे दिमाग में जो मेरे को अच्छे से fit बैठे. That is like the 2016 वाला final T20 World Cup and Manchester में जो न्यूजीलैंड के सामने innings खेली थी. So I think उसके अलावा I think I did not rate him that highly क्योंकि at one point everyone thought he is the next big hitter. I think IPL में भी अच्छे प्राइस पे बिके थे for some teams as well. So yeah, I did not rate him that highly. बट एक जो चीज दैट विच ऑब्वियसली डिसअपॉइंट्स जो वेस्ट इंडीज के बारे में ही रहा है कि बहुत बार यही सवाल स्ट्रीम पे आई थिंक ये सीरीज को जो हमने कवर किया आई थिंक बहुत बार ये है कि क्या हो रहा है वेस्ट इंडीज के साथ. लाइक आई कैंट इवन फाइंड एनी रीजन कि व्हाई वुड दे ड्रॉप समवन लाइक शिमरॉन हेटमार. लाइक आई मीन रीजंस ढूंढने पड़ेंगे आपको लाइक द वे ही हैज डन इन आईपीएल या फिर उसके पहले भी आईपीएल खेलने से पहले उन्होंने she contributed a lot. I think not sure कि हर बार होता क्या है कभी इनका वो फ्लाइट लेट हो जाती है कभी टिकट्स नहीं आते. लाइक these are the problems which is not supposed to be faced by a cricketer but overall they ignore him as a cricketer. And why would someone like Russell and all I think ये big names अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि they want to play but again it comes down to कि बोर्ड क्या जाता है. So ये बोर्ड का थोड़ा आई थिंक ये एक और इशू रहा है. I mean
आई डोंट नो, इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट इन अपकमिंग टाइम्स। है तो यार घर पे सिर्फ वर्ल्ड कप खेलोगे, उसके बाहर तो मुश्किल हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर क्वालिफायर्स के लिए भी हो सकता है ये। Exactly. I think बीच में हुआ भी था यार. I think they were playing Australia at home. I या think this was like a couple of years back जब Gale was back, when Russell was back, when Pollard was back, when Bravo was back, Samuel Badri was back. So I think उसके बाद मेरे को याद नहीं कि जब मैंने सबको एक साथ एक ही टीम में देखा था. सो उसी के साथ आई थिंक अश्विन की 50 हो गई है. आई थिंक ही इज द परफेक्ट टेस्ट क्रिकेटर. आई थिंक गुड इज अंडरस्टेटमेंट. आई थिंक ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कह सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. यस, क्योंकि 400 कितने विकेट्स हैं, 400 से ऊपर ही हैं अब तो विकेट्स, या 439 और समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो एंड मोर देन 3000 रन. सो किसी को भी ये करियर चाहिए होगा, आई थिंक दे विल swap it with Ashwin. So yeah, I या think he's probably one of the best all-rounders the या game has seen. Yeah. Hmm. और क्या बात करें अंकित, कुछ बचा है बता बात करने के लिए, वरना अभी लेट्स. तो आई थिंक वी कवर्ड, आई थिंक WTC फाइनल के प्रेडिक्शंस, वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शन, एशियन गेम्स की वो तो बातचीत, MLC की बहुत. बातचीत, हाँ. न्यूजीलैंड श्रीलंका, आई थिंक बहुत सारा कंटेंट वी हैड टू डिस्कस टुडे, बट बहुत मजा आई थिंक अभी तो। आई थिंक या अरे, उसी बहाने आई थिंक इंडिया ऑल आउट भी हो गई आई थिंक। yes. सो या नसीर भाई ने बोला अश्विन इज अ गुड ऑलराउंडर, नेक्स्ट बॉल ही आउट हो गया. तो आयरनी. तो यार आपने सही बीसीसीआई को सोचना चाहिए, ऐसी टीम से मैचेस कम करो. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में जाके जमाओ. जैसे जैसे प्लेयर्स ज्यादा पहचाने जाएंगे यार. I think this is not on the BCCI, to be honest, to in terms of like Test cricket. I think that is ICC के अंडर आता है. The आई cycle जो भी थिंक बनती है, I think ICC presents that cycle if I'm not wrong. So वो या बीसीसीआई के शायद हाथ में नहीं है. I don't know about the white ball circuit. I think वो उनके हाथ में है. That I agree as well. I think that they are doing, to be honest, to a decent extent. कभी ऑस्ट्रेलिया बुला लेते हैं खेलने, कभी इंग्लैंड को बुला लेते या हैं, कभी न्यूजीलैंड को बुला लेते हैं. So I think that is still okay. Yeah, I think टेस्ट वाले पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ कि मजा आएगा if there is like more England, Australia, India in like every year consistently. So या ऑल आउट हो गई अभी तो ठीक है. तो यहीं पे हम स्ट्रीम को भी एंड करते हैं. या थैंक यू सो मच यार एवरीवन इन द चैट. मजा आ गया काफी, पता ही नहीं चला 1.5 घंटे या का. हमने प्लान तो करा था आधे घंटे के आसपास करेंगे, बट हम 1.5 घंटे कर गए. दैट इज द फन. आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट वी डू नॉट स्टॉप. दैट्स द थिंग विद अस. एंड once again everyone, अगर कोई लूप में बाद में देख रहा है the video, just like the video, subscribe to the channel, help us reach that 3000 mark really quick. Follow us on all social media platforms. These are the links जो भी आपको नीचे दिख रहे हैं. So just go there, click the follow button, click the subscribe button, whatever you see. So एक last message पढ़ लेते हैं. 438 गुड स्कोर. आई थिंक 2 इनिंग्स ऑल इंडिया तो नहीं खेल रही है फिर से, अब नहीं लग रहा है मेरे को. या सो 2 इनिंग्स में मिला के, सो अगर दो दो में डिवाइड भी करो तो 220 बनाने वेस्ट इंडीज को हर इनिंग्स में, विच इज आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है. सो या आई थिंक इंडिया जीत गया यार. वैसे भी हमें पता था ये रिजल्ट, ये मैच का क्या ही होने वाला है. इंडिया को 3 या 4 दिन भी रहता है, आई थिंक इंडिया वुड हैव वन दिस गेम. सो या थैंक यू सो मच अंकित. नेक्स्ट टीम में मिलेंगे. आई थिंक होपफुली इफ द एशेस का रिजल्ट हमें दिख जाता है, देन वी विल अगेन जॉइन and या talk about the game, and hopefully we'll have more people in the stream along with Nasir Bhai, Rahul, Just Sports, Aditya there was there as well in the start, and other people जो भी देख रहे हैं video. So thank you so much once again. We'll all see you in the next stream.